all. Welcome all of you, all our viewers and team. Here, me, Krishnan Singh, along with Ignite India team, we have joined, and we have here, in from our team, Deepti has joined. The soon our team will join, and they will have an exam analysis in detail of each paper, and they will discuss with you also in the detail how all the paper is. First of all, I would like to show you how the appropriate setup supposed to be. You can see here, Ajit, how are you? Ajit, you are in the live right. So you join? So join. Look at here this setup, how it's given the exam and things like that. Meanwhile, Deepti, how was your experiences with this student? I want you to share, and then obviously we'll continue. Yes, Asha. Yeah, so I discussed with a lot of people today, like from the morning, I'm talking with like everyone to wish them luck, like for their exam. And just now I talked to like 10 to 15 people. All of them are like, it's like easy paper, it's not like very tough and all. So most of them are completed, like they did very well. And there are not like a lot of GK questions in the exam. Like many people told me about this. And English is quite easy, although it's like I guess French Revolution. There are two passages of French Revolution in English section, and about maths is also fine. I guess most of the people are not like that much comfortable to do maths because they are not from that department. But yeah, everybody did like quite well in the exam. We have one like student of ours, Adi. So yeah, he can also explain like how he felt during the exam and how he did. So yeah, guys, Adi is here with us. So Adi, can you like please tell us how's your exam and how you felt during your exam? How's your experience? हेलो हाय मैम Please, हाय hi Adi. मैम ना So इट वाज नाइस एग्जाम मेरे को अच्छे से हुआ बस सब कुछ अच्छा हुआ बस प्रिपरेशन अगर जिसने भी अच्छे से की होगी वही अच्छे से कर पाया होगा बस so क्वेश्चन वाज according to इजी you, like how you will rate the exam? Like the difficulty levels is for moderate or easy or like hard? फॉर मी देयर वाज नो डिफिकल्टी मेरा जल्दी टाइमली लॉगिन हो गया था और मैंने टाइमली सबमिट भी कर दिया था थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी ड्यूरिंग द कैट एग्जाम वो लोग बार बार बोल रहे थे फाइल अपलोड करने को बट मेरी अपलोड हो चुकी थी एंड शो नहीं हो रही थी बट Okay. नाइस था सब कुछ हो गया वेट है रिजल्ट का होपिंग फॉर बेस्ट So, like, according to you, what difficulty students must have faced during the exam, like CAT or GAT both? uploading file in cat they have must uploading file in get कोई प्रॉब्लम उतनी आई नहीं कैट में ज़्यादा अपलोडिंग फाइल्स जो करनी थी हमको उसी में प्रॉब्लम सबको आई है और क्योंकि सब एक साथ लॉगिन कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने आए हैं तो इसीलिए टाइम लगा सब सर्वर डाउन हो रहा था बस और कुछ नहीं
तो आपने कैसे डील किया लाइक बिकॉज उस टाइम पे बहुत स्टूडेंट्स का ऐसा होता है ना, लोग मैसअप हो जाते हैं, थोड़ा ऐसे स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उस टाइम पे काम डाउन होना थोड़ा ज्यादा लाइक ऐसे ना बहुत मुश्किल होता है। और एक्चुअली वही चीज हमें करनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में आप एक बार स्ट्रेस आउट हो गए तो वो चीज फिर अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाते। तो आपने कैसे डील किया उससे? एक्चुअली एग्जाम जो देते हैं ऑलवेज हम लोग ऑफलाइन दिए हैं, फील होता है अगल बगल पीपल हैं और एग्जाम देते हैं कि लगता है एग्जाम, बट इट वाज ऑनलाइन ऑल अलोन इन रूम सिटिंग ए पेपर सामने स्क्रीन जस्ट सॉल्विंग, इट्स लाइक डिफरेंट था, थोड़ा अजीब सा लगा, बट हाँ एक्सपीरियंस किया अच्छा लगा। या लाइक जब आपने एग्जाम दिया तो इग्नाइट इंडिया से आपने यहाँ से एग्जाम दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो लाइक फैकल्टी का कैसा रिस्पॉन्स था? आप थोड़ा लाइक एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे कि कैसा आप? सपोर्टिव था देयर वाज, यहाँ पे फैकल्टी थे और इन्होंने मेरी हेल्प की। मेरे को पता नहीं है हाउ टू यूज दिस मच ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने मेरी हेल्प की, पूरा सेटअप्स तैयार किया, आप देख सकते हो। तो उन्होंने मेरा पूरा सेटअप तैयार करके मुझको दिया और मुझे बस एग्जाम देना था, दैट्स इट। सो थोड़ा आपने रिलैक्स फील किया राइट, बिकॉज ऑफ या आवर फैकल्टी, लाइक हाँ, एवरीवन देयर विद यू। वाज देयर, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, अगर फैकल्टी मेरी हेल्प की है थोड़ी तो थोड़ा कॉन्फिडेंट आया। सो आप थोड़ा एग्जाम के बारे में बताइए, लाइक कौन से सेक्शन आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट थे और उसमें क्या डिफिकल्टी आपको लगी? For in CAT question there was one question, first question वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट उसमें 3 थे, तो जो मेरे को इजी पार्ट लगा इन आफ्टरनून वाला मैंने वो बना के दिया। सेकंड क्वेश्चन वाज लाइक फेदर बनाना था मेरे को, जो सेकंड पार्ट था वो मैंने चूज किया क्योंकि और भी उसमें पार्ट थे, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। हर क्वेश्चन में इन्होंने 3-3 पार्ट दिया था, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन 3 पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी 3 पार्ट का था। तो आई चूज दी जो मेरे को सुटेबल लगा, जो मेरे को इजी लगा, मैंने वो किया। गैट में आई फेस प्रॉब्लम इन मैथ बिकॉज इट्स स्टिल वीक फॉर मी। परसेंटेज वाले क्वेश्चन मेरे से हो गए, बट जो सॉल्विंग क्वेश्चन थे बाय वो एक्स वाई वाले वो मेरे से नहीं हो पाए। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट और अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। और इसमें 2 पैराग्राफ था इंग्लिश का, इजी था, मैंने सॉल्व किया। इट्स रिलेटेड टू रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। या सो और लाइक इंग्लिश वाज क्वाइट इजी पार्ट फॉर यू राइट? हाँ, फॉर मी इट्स पार्ट इजी। एंड जो रीजनिंग थी इट्स रिलेटेड टू मैथ्स, टाइप वाली थोड़ी थी और थोड़ी सी जो हमारी कैप लेटर्स वाली होती है वो थी, इजी थी, कोई कंफ्यूजिंग नहीं थी। आई थिंक सबका अच्छा गया हो। एंड या कुछ लोग अभी यूट्यूब पे लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, आई कैन रीड कि वो लोग पूछ रहे हैं विल आवर पेपर बी सबमिटेड इफ वी डोंट प्रेस सबमिट बटन? सो आई गेस या इट्स लाइक बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू एडजस्ट, बट आई गेस वो अपने आप सबमिशन हो जाता है, बिकॉज अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो सबमिट बटन प्रेस नहीं करते तो टाइम पे तो ऑटोमेटिकली कैच कर लेता है डाटा। तो आपको स्ट्रेस्ड आउट होने की जरूरत नहीं है गाइस, रिलैक्स। एंड अदर क्वेश्चंस आर लाइक या MDes was hard, okay, it's okay, अभी एग्जाम हो गया तो अभी आप लोग इतना स्ट्रेस मत करो, इट्स ओके। चीजें कभी कभी हार्ड भी होती है, मॉडरेट भी हो जाती है। तो हार्ड है तो वैसे भी कट ऑफ का उतना सीन नहीं रहता है, लाइक कट ऑफ थोड़ा मॉडरेट ही जाएगा, मॉडरेट लेवल पे अगर हार्ड है तो एग्जाम। सो डोंट वरी गाइस, इट्स फाइन, आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया, सो इट्स इनफ फॉर यू। और अब रिग्रेट नहीं करना है, इट्स जस्ट कि हाँ एग्जाम हो गया, अच्छा हुआ, आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया, वही आप कर सकते थे एज अ स्टूडेंट। एंड या सो आदि आपने प्रिपरेशन कैसे की थी, आप थोड़ा बता सकते हैं लाइक किस लेवल की आपने प्रिपरेशन की थी और लाइक क्या लेवल रहा एग्जाम का? मैंने प्रिपेयर जो किया था उसके हिसाब से कैट में जो मैंने प्रिपेयर किया था उसमें से, हाँ, रेंडरिंग इज अ थिंग जो मेरे को सिखाई गई थी इग्नाइट इंडिया में, वो मैंने सीखी और मैंने की है। सेकंड वाज, क्वेश्चन वाज क्या था, हाँ, इट्स लाइक अ व्यू। तो वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हाँ मेरे को याद आ गया थोड़ा थोड़ा। फर्स्ट था विंटर व्यू, विंटर की नाइट का व्यू बनाना है। सेकंड था आफ्टरनून में आप अपने एक फ्रेंड के साथ बैठे हो, उसका एक व्यू बनाना है। थर्ड वाज लाइक डिफरेंट था, मतलब थोड़ा सा बच्चे खेल रहे हैं शाम को, उसका व्यू बनाना है। ये थर्ड 3 क्वेश्चन थे, बट आई चूज द सेकंड वन। और उसमें मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट कलर यूज करना है। तो जितना मैंने यहाँ पे सीखा श्रुति मैम, विजयन सर से, मैंने वो चीज उसमें अपनी इन्वॉल्व की है फॉर मेरे तरफ से।
अदर्स का मुझे नहीं पता, मैंने अपनी तरफ से जो भी चीज थी वो मैंने की है। Okay, now Krishna sir will take over, guys. Well, I mean, we all will be there throughout, and I really congratulate the team. Aditya is here, Deepti is here. They'll be continuously with you throughout this session. We'll have a chair. I wish all of you to, like, to celebrate this virtually. Your exam got over. It's like a big task throughout the exam since morning. And the first of all, I would like to tell all our students who is joined here on joined in YouTube, and many more is supposed to join in class also, completing the exams. So why we come live so that we can discuss with you, we can know, because I'm getting so many personal calls, and entire team, in fact, like, they're getting a call and answering the students personally. So rather than that, let's have these discussion, like, common platform. You come, you ask, Deepti is here, Aditya is here. Slowly other team member will also join. So we'll be answering you, we'll be taking your question, we'll be understanding your problem. And I know some of you have faced the problem while submission, not able to submit it. I know morning started with, like, link was not opening. Then we have given the admission link, to that one you try. So if you ask me, really, this was the first-hand experience for like, management or for a student. So that happens. Server was down and sometimes this. So these are quite normal things. And that was common for all of the student. It is not like, for all, but yes, master is still understandable, but bachelor student, I understand. I mean, this is very way different experience for all of you. So we will take your questions. Are we have tried helping as many as a student we can, what next to be done step by step. And I suggest all of you to share your experiences. Something went wrong, whatever happened, let's discuss, tell us. We'll find out what next to be done. I mean, what I said, like, between those time, between 1 to 1:15, that when you are trying to submit, many of you, I suggested mail them first. So that if in case mail is done, you have documented, you have submitted the same document in mail. I didn't get time to explain, but that was the reason. And after that, you keep trying to submit. So in case if you have submitted half an hour late also, but your things are documented, so it's helpful. It's good, right? So there are few steps which is primarily and necessarily has to be taken. Now I see many of the students are facing a problem, saying that in second level of the exam they were not able to attend, and they are not able to submit their CAT. So obviously if you are not able to submit it, moreover this was the GAT exam, automatically it got submitted, exam time hi khatam ho gaya, so you cannot solve the paper, and that's normally happened during a UCEED and CEED exam. So I want what type of the setup, how it's supposed to be, how you are supposed to give the exams and other things. That team will explain you right now. And many of the students have joined, so it's better. That's what I kept it today time to let's discuss. तो आप शेयर करो, बताओ, दिखाओ क्या करा आपने, जो भी क्वेश्चंस हैं, be it you are for bachelors, be it you are for masters, MFM, BDS, BFT. So many students have joined till now, I see here in session also. And we'll be taking, Deepti will keep taking a question from YouTube. She will answer you, we'll also answer you. And the team is there, rather than on call or messaging you, we also got bored. So we'll be here in session and we'll try to give everyone answer. We'll try to connect with everyone, whomsoever is joining. And please, Aditya, Deepti, let's try to keep this like, and even students can, others also can join the hand. I can see Neha, Vineet, Chandni, Fida, Shuvarna also faced the problem. So when you will tell about that, what happens, what you have faced, so student will able to relate other of them. Now also I'm getting a call while speaking this, like, I got 2-3 calls already. तो आप जब बताओगे तो पता चलेगा. जैसे हमारे पास आदित्य भी है, both paper he completed hour before. So I mean, I don't know, in after 12 he called me, okay sir, CAT हो गया, मैंने submit कर दिया. So like, almost before 4 only he submitted the GAT also. तो आप मेरा भी हो टाइम गया था. मैनेजमेंट अगर करोगे तो वो बढ़िया होगा. You do it far better, है ना? Chances होंगे. तो come join, discuss. Meanwhile, I'll over to Deepti to take first few YouTube question, then we will take from class also.
and more important is you share your experience. You will also feel relaxed. और हम लोग फिर सारा आगे क्या करेंगे हम लोग सेशन में, why you have to be there, आगे will based on your all experiences we will analysis each department and top like जो आगे क्या करना चाहिए, क्या कटअप होगा, क्या मार्किंग होगी, क्या हुआ था, based on all this story. So you have to tell me a lot. अभी बहुत लोगों से सुना है but बहुत बताना होगा आपको, then we can come up with that. Okay, so let's have this kind of a primary level of study and discussion and all the experiences. So over to you, Deepti now. Yeah. Can you guys hear me? Hello? You are audible. Yeah, okay. So like guys, it's a question for you. So Sakshi on YouTube is asking, were you all able to complete all the questions in CAT? So any students wants to answer? Adi, Anita, Archie, Gupta, Chandni, anyone? Guys want to answer? How much questions were you able to complete and like yeah, Aditya, you're smiling. You completed all the questions? Actually, I didn't heard the question. Can you? Yeah, actually, I'm asking how many questions were you able to complete in your exam? All question. I completed all question. I didn't left any question. Oh, it's nice. Okay, so I I skipped hope. 5 to 6 questions. I skipped. Oh, Okay. you're talking about yet? Then I have skipped maths questions and Yeah. some parts of it. Okay, what about others, guys? You want to tell? Disha, Dia, Falguni? Ma'am, I have completed everything, but then before the minute I saved it, the test got switched off on itself. So would it be okay? Yeah, I guess like it's like maybe you cross the time limit and the test Yeah, just went. like 1-2 seconds. Yeah, I- yeah, yeah. So- CAT may they extended the time, so I thought GAT maybe they. Unlucky for you. It's okay. I hope जो जितना किया है उतना अच्छा होगा. So it's okay. Don't stress now. No, I ma'am. hope. No, I submitted everything. I was just Yeah. waiting. So does that mean my paper got saved? Yeah. Obviously. Okay, thank you. Then next, some of the students are saying maths was tough for BDS. Some are saying like math questions are tough. GAT was lengthy. So like what you like what's the take for you guys on these questions? Like what is difficult part for you and like what is lengthy? Some of the students are saying on YouTube like they don't get the options. Like the options are not matching for the passage questions. So tell me your experience, guys. Ma'am, I think this time the weightage got distributed. I think questions from English was more in BDS, NIFT BDS this year. And comparatively, it was quite complicated and difficult and lengthy also. Yeah, so guys, can I get your videos on, please? Like Anuja and Yes, guys, please on the video. मैं भी तुम लोग के लिए करके बैठा हूँ. Same, please. see Adi is requesting. So guys, please, like while speaking, just take care. You guys have your videos on. So first, we will take like one-on-one like experience sessions with you guys. Like for CAT, we will discuss. So I think Dikshita. So you want to say like few words? How's your experience for the CAT? CAT, I answered everything, ma'am. Like it was okay this time, CAT. But then I could not color the first one. Then I later got to know that we don't need to color it. Okay. Then Neha, Fida, Disha, anyone, guys?
Ma'am, the passages were actually kind of difficult to comprehend than those which we practiced. So guys, like anyone who wants to like answer my questions can raise their hands, like so that it will be easy for us to communicate. Like what questions you opted for the CAT exam? Like what were the portions and what you did? Like what was your thought process while doing the answers? So anyone wants to discuss? Like anyone wants to say some words or like gives your experience? Yeah, Adit, we will start with you. In the third question, there was the question asked for design a gift wrapping. I am telling I hope, second one. Third का second part है gift wrapping paper for a perfume brand. So I want to ask पहले तो कि we have to write a perfume brand name or not? Because I write the name of perfume brand and then I make the gift wrapping paper for that. And I use a creative word and the word I used accordingly that I have made the gift wrapping paper. So can anyone can answer me? I have to write the name of brand, perfume brand or not? Yeah, so how many of you like wrote the name for the brand? Can you where like can anyone can say? Yeah, Shruti, Neha, anyone, guys? Please switch on your videos like while talking, guys. Yes, I ma'am, can just 1 second. Yeah, can you see me now? Yeah, Shruti. Yeah, so I attempted the perfume brand question actually. So I wrote the name of the brand. It's not compulsory or anything, but it's our choice because we can add a logo and a name to it. I thought it looked more complete with the name, so that's why I added. I hope I answered. That's why I added it too, the name. Yeah. Also. Yeah, so I guess I this think could for this year question was too easy कि जल्दी जल्दी हो गए. I completed in 2.5 hours. I think इस साल कुछ ऐसा ऑनलाइन किया तो उन लोगों ने इजी कर दिया. okay, so you're doubting or like it's easy. डाउट तो इतना नहीं है फॉर क्वेश्चन. हाँ, बट कुछ क्वेश्चन में हम डाउट पूछ सकते हैं. वी हैव टू मेक अ afternoon with a friend sitting in a coffee. So it's very normal, someone having coffee, and we don't have to color it. We have just draw visual. So we don't need perspective and all to draw that. We can use if you want to show creativity, but I don't think it's not important. But the camera quality of that app, you can access app, is so bad कि हमारे कलर्स की हमने इतना अच्छा फोटो क्लिक किया, वो अच्छे से क्लिक नहीं हुआ फोटो. जितना भी हम लोग ने क्लिक किया फोटो, यू कैन एक्सेस ऐप का फोटो क्वालिटी बहुत बैड है. हाँ, ये क्वेश्चंस कई सारे बच्चों ने बताया जो उनकी क्वालिटी और ये चीजें क्लियर नहीं हो रही थी. और आप क्वेश्चंस भी देखो जो मैंने शुरू से बताया था आप लोगों को. दिस वाज मोर लाइक अ कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन. जो है आइडिएशन का था आपका क्वेश्चन में. ये था जो आप कैसे उसको अटेम्प्ट करते हो, आपका बिहाइंड ऑफ स्टोरी लाइन क्या है, राइट? So I can see some of you want to show. Maybe Dikshita is showing some pages here, so you can explain the Dikshita what you want to say. So I actually opened my GAT test again. It's not showing that I submitted the test. It's showing that test ended. So I'm just scared for that. Ended means that only your time got ended, so it's got submitted. This is a good question you have raised. Many student has faced this problem for all the hour. I see this question has been asked in the YouTube also. Many of them is asking right now. I would like to tell my dear student, nothing to worry about it. There's a two way to submit. One is under the time you have submitted the question, and one is you have not submitted the question, it got over. Race khatam ho gaya. So there is no meaning after that also if you are running, like, it's got over.
So this is what happened with you and many other students also. All right. Yeah, Bhavika has raised the hand now. Yeah, Bhavika. Sir, I want to ask that once I have uploaded my PDF, it was uploaded and the message came like it has been successfully uploaded. And then a pop-up message came that you have to upload one more file, like after a very long time. So is there any problem? Like it's been submitted, no? See, there I is got the a message same. I also got the same messages 3-4 times. Okay. Okay. Yes, sir, Okay. me too. But then I again clicked on the examination since I had done it 2-3 minutes ago. Started the process again and again. I submitted it. It was So then Yes. I called on their helpline number and then I asked them that whether it is submitted. So they said that it has been submitted. So I think we just received it as a reminder message so that we don't, Yeah, maybe. whoever hasn't Good. completed it yet, they'll get it. Yeah, Shruti has raised a good point over here. That's what I was coming to also. Personally, I got almost 10-12 paper within 2 minutes. Many of you are sending me format of PDF what you have submitted, and we don't mind to guide you and discuss with you, share you all the detail. Let's come back on these questions. This is true. Many students was getting this notification, and if you will see the pattern during your test only, some of you have called and it has said that अच्छा आपने test दे रखा है, so this was not for you. ऐसा हुआ था ना? I mean, might be anyone is here who have contacted on the helpline number and get to know this message. Yes, sir. I asked them whether it is submitted or not. So they said it has been submitted. So about submission, about your initial primary test, some of you have given the test 2 times. Some of you have given the test only 1 time. Some of them given again because आपको लगा क्या होगा, or some of them not given the test also, and they also appeared in the exam. And that time also I said on and off, like, because I'm not authentic, information source of जो मैं ऐसे बोलूं management के बारे में, but I said that very clearly. So every student will write the exam, and you can ask the people who haven't given the test, those parents and student. I don't want to name it here. Morning also I have done the follow up with them. अच्छा आपने आज लॉगिन किया कि नहीं? क्योंकि क्या हुआ, जिस बच्चे ने टेस्ट मॉक टेस्ट नहीं दिया था, एक बच्चे का जैसे अब डिवाइस में प्रॉब्लम था, उनको पता ही नहीं था उनका डिवाइस का फ्रंट कैमरा काम नहीं करता. So test was only for your trial. That was understood beforehand on. Okay, same way, this submission also will be negotiable, because whenever there is a peak hour, like suppose 9 o'clock, server went down, so obviously they have to negotiate. Again 1 o'clock, जैसे आदि ने 12 बजे सबमिट कर दिया, is a superstar, like, 1 घंटे पहले ही पेपर. But if somebody want to submit by 1, so it might be done in 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:48 तक I know few students who have submitted the paper. All right. So why this all we are discussing in a common here on the ground? I want every student should feel very peaceful today. You should not have a single doubt. इसलिए आपका शेयर करना, बताना every step क्या करा आपने, बहुत जरूरी है. So we'll take it. Excuse me. Yeah, please. Sir, I forgot. I was about to click the save button in the GAT paper and it ended automatically before that. So I called them and they said कि the paper is automatically submitted. So is it automatically submitted or my paper is not कैमरा को ऑन करो, देखिए हम क्या बोल Yes, रहे हैं. sir, same. I have the same problem. कैमरा. Yes, I'm worried about the same thing. It just ended before I clicked on save and finish. I was just reviewing the previous questions and I lost track of And time. it I was was like, submitted. Sir, I submitted it इसलिए पहले क्योंकि वहाँ पे लिखा था you have only 3 hours 15 minutes. इसी में तुम्हें सबमिट भी करना है, इसी में तुम्हें लिखना भी है, इसी में तुम्हें करना है. तो इसीलिए मैंने जल्दी किया, जो भी आया इजी वाले चूज किए. No, not मैंने the अपना drawing बेस्ट दिया. one. I'm talking about GAT. Yes, cat. Oh, okay, GAT. देखिए अभी. Yes, great to see you. कैसा लगा आपको गैट करके? कितना क्वेश्चन बनाया नहीं गैट में आपने? सर मैंने ज्यादा नहीं छोड़ा. मैंने 80 क्वेश्चंस किया था जो आई एम 100% श्योर अबाउट. तो you उसके guys are बाद getting in test also 80 plus always ना. हाँ, तो आई थॉट कि बाकी थोड़ा बहुत तुक्का लगाते हैं. 5-6 क्वेश्चंस में मैंने तुक्का लगाया. देखते हैं अब क्या होता है. Good. I got your cat paper also. That was also good. वो भी अच्छा करा आपने. करेंगे, बात करेंगे overall. And I can see the confidence also yours on your face.
Well, what about you then, Manogna? And Shruti was there. Shruti, आपका कैसा हुआ? Cat is yet to check. I don't know. आपने बोला था भेजेंगे, अभी देखा नहीं मैंने. Sorry. Cat कैसा रहा आपका? Yes, so that was also good actually. English mein thoda, there were like quite a few complicated words, but yeah, otherwise I think it was fine. Even comprehension was understandable, and I was able to finish it on time, and I submitted it. So yeah, I think it went well. Any guesses? I mean, what number of the question you have solved? Any idea? Please tell me. I did leave a few, but definitely 400. Yeah, more than I would have hardly left like 10 questions or less than, and more than 90 questions I've solved. You have left 10 question of CAT, you are saying, moreover. I mean, sorry, English portion, maths, reasoning. No, not like that, sir. 4 to 5 questions only are left. But I'm saying overall, 90-95 plus questions I've solved. Okay, great to know that. First, I mean, I'm more interested to know all this for all of you. Now, coming to your CAT question, part which you are talking about, paper got submitted. I mean, minute before we have discussed, I think you have joined in between, you guys are. We have discussed. So there's a two-way. I think I was explaining to Dikshita at that time, right? Dikshita? Anna, सुना नहीं मैंने? Yes, sir. Okay. तो मैं वही बता रहा था. So there was a time has been given to GAT. So if you haven't submitted, it got submitted automatically. Because first hour the MFM, MFT, MD and student was having exams. So you can ask them also. Either they have pressed the button, submitted, they have submitted, and or else it's got submitted. There was a different bug for them, error, we can say. What was the error for them is, we were telling them to submit the paper. क्योंकि first hour में इनका GAT था, है ना? आप लोगों का CAT था और उन लोगों का GAT था. But उनके GAT के लिए तो कोई रफ पेपर नहीं था, but उनको ये error आ रहा था. तो कई लोगों ने उसके लिए कॉल किया, तो सर क्या कुछ सबमिट करना है क्या? So I was trying to analyze the paper, website, background, trying to get the back access. Then the other student step जितना हो सकता था. Then I realized in 9 only admission वाला link ज़्यादा काम कर रहा था, NIFT AC वाला direct काम कम कर रहा था. That also helped few student. I have seen they have replied also. So overall, explanation was only mandatory in the last question of CAT exam, like 50 to 70 words explanation. If word, yes, that was mentioned there. But if you will read, they have given total time, and they have given you, I mean, because student was keep sending a screenshot in between. And not during the exam, before that, let me put the disclaimer here. So nobody has sent me during the exam time. So what was there? I have seen those. It was very clearly mentioned. They have given you 15 minutes extra to upload, and they extended the time also. Because server down हो रहा था, तो बच्चों के लिए जो अगर कोई late हो जाता, right? And during that time, the student has started crying, getting upset, and the quite obvious normal. Many of you are writing the first time exam, and वो भी online. But good for you guys, so you have at least some experience. जो आपने already mock paper यहाँ पे सब दे रखा है, तो थोड़ा better था आपके लिए, right? Sir, I guess Shivanand wants to say something. Yes, please take the question. Yeah, Shivanand, say. हाँ, तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गया हुआ था कैट के सेक्शन में. जब मैंने अपलोड कर रहा था ना फोटो सेकंड डिवाइस से स्कैन करने के बाद, तो मैंने जब अपलोड कर दिया, वहां पे था ना ये ग्रीन क्लाउड अपलोड के लिए सेकंड डिवाइस में था ऐसा, ठीक है. तो उसको अपलोड करने के बाद में वो अपलोडिंग और अपलोडेड सक्सेसफुली, और वो रिफ्लेक्ट भी करने लगा अपलोडिंग पोर्टल पर लैपटॉप में. उसके बाद में कुछ नोटिफिकेशन आने लगा, मतलब कि जो सेकंड डिवाइस को हटा देते थे वहां से, मतलब कि हेलो, हाँ से हाँ, तो समझ गया ना. तो वो अनपेयर हो जाता था ना सेकंड डिवाइस तो और वीडियो में भी ऐसा था कि उसको फिर से पेयर करना पड़ेगा, फिर जाकर के अपलोड होगा पेपर. तो वैसा कुछ हुआ नहीं मेरा तो ऐसे ही आने लगा अपलोड होने के बाद में पेपर को सबमिट करने के लिए, और मैंने सबमिट भी कर दिया. और वैसा कुछ मेरे को फिर से पेयर करने की जरूरत नहीं पड़ा सेकंड डिवाइस को फर्स्ट डिवाइस से, और वो सारा सबमिट भी हो गया. तो फिर से मैंने
लॉग आउट करके फिर से मैंने किया तो फिर से कुछ नहीं शो कर रहा था। तो ये मेरे को जानना था कि मेरा पीडीएफ अपलोड हुआ या नहीं कैट हेल्पलाइन में कॉल listen, करके पूछो। हाँ कॉल listen, करके मैंने बात किया, फिर वो बोले कि हाँ हो गया ही होगा अपलोड। listen, if तुम्हारा अगर वहां पे जो लिखा रहता है सेट सेकंड डिवाइस, अगर वो शो नहीं कर रहा तो इसका मतलब तुम्हारा पीडीएफ गया, और तुम्हें तुम्हारे मोबाइल पे भी मैसेज आएगा। तुम अगर उसको काट के ऊपर देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा ऑटोमेटिकली पीडीएफ सक्सेसफुली मतलब सबमिटेड। मोबाइल में भी मैसेज आएगा और तुम्हारे इसमें फर्स्ट हाँ डिवाइस नहीं है। मोबाइल में आ गया हुआ था ये ग्रीन टिक होता है ना ऐसे गो हो रहा था ना कुछ ऐसा। उसके बाद हाँ वो ग्रीन टिक गोल होने के हटने के बाद भी हाँ एक ऊपर मैसेज। ऐसा क्या? और फोन में भी ऑटोमेटिकली पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। नहीं यह फोन में तो said अभी भी more अपलोड करने over के लिए दिखा रहा है। शिवानंद, उसके बाद भी नीचे में वो एक बार वो बॉक्स में दिखाए थे लाइक इज दिस द पीडीएफ यू वांट टू। हाँ उधर शो कर रहा था, फर्स्ट डिवाइस में शो कर रहा था। देन इट्स हाँ सबमिटेड। फर्स्ट डिवाइस में ही ठीक है, फिर उसके बाद एक और ऐसे लाइक वो पिंकिश जब कलर की नीचे विंडो शो कर आती रहा है ना है। उस बॉक्स में अगर शो कर रहा है तुम्हारा जो हाँ तुमने क्लिक की फोटो, इट्स सबमिटेड, ऑलरेडी सबमिटेड। लेकिन और मोबाइल बस में अभी भी वो ग्रीन क्लाउड वाला है ना मोबाइल मोबाइल को में। तुम छोड़ो, मोबाइल को घर हाँ छोड़ो। नहीं इट्स वो फाइन, देखो मेरा भी उतना ही है, इट्स सबमिटेड। सब मेरा भी वही था, वो तो मेरा भी पीडीएफ वही था। बना रखा है आपने, तो वो तो आपके फोन में रहेगा। नहीं वो नहीं मैंने बोल रहा, जो ऐप में है पीडीएफ ना वहां पे अभी भी डिलीट और अपलोड का ऑप्शन अभी भी है। हाँ हाँ वो नहीं वो रहेगा। मेरे वही है। इसमें भी है, सभी शिवानंद इसमें। डोंट वरी अबाउट इट, तुम्हारा सबमिट हो चुका है, सबका यही था, मेरा भी ऐसे हुआ और है। ये था एक मिनट हाँ दूसरा जो पूछो। सेकंड डिवाइस को फिर से पेयर करने का था, अपलोड करने का, नहीं वैसा सबके साथ नहीं था क्या? जरूरत नहीं है। नहीं फिर से नहीं करना था फिर, जस्ट वंस देन ओके डायरेक्टली थैंक यू ड्यूरिंग गैट एग्जामिनेशन। थैंक यू। Sir, I wanted to ask one thing. I had a huge emotional breakdown. Is 65 or 70 a good score? Well, when it comes to the score this year, if you ask me about the score, so I believe cutoff will be even less than 50% also. There are few things I said, every student will write the exam. If some of you have a problem, so they must be aware about it. I said that, no worries. That last night also some parents have contacted me or random year students that I have not given the test. So same way here, I would like to tell you, no worries if you haven't scored like 7. I talked to the few students because I know more and I have seen them like doing good in that and all, but being in general, if your GAT score is 50 plus or आसपास 50 के आसपास है and you have done well in CAT, still your score will be good. What we are planning is for all the students, we have already started. Today I have not kept it because I know it will be a very stressful day for everyone. So there is no class as such today. Tomorrow you will have GDPI and portfolio classes. So PI is going to help in almost every exam. We don't know what format NIFT will keep. So we have to wait for it. And Tuesday, every alternative day, Tuesday we'll keep situation test and studio test class commonly. Because we all know by February or March, NIFT and NID both result will come. And possibly they will keep everything online. So we have to look ahead, what next? The next round where you have 20 to 30%, those weightage are really going to matter a lot. Be it you have a 80 plus or around 80 in GAT, or you are having in your GAT around 50. क्योंकि ये ना पूरा चेंज कर देगा. You know the weightage of this one is except for MFM, MFT and BFT, those are exceptional cases. Other all you are having a second round and their weightage are GAT weightage are just 30%. So imagine GAT जो है एक role play करेगा, but the vital role going to play this year is second round. That's what we have shared the yesterday one form also, where you have to fill the detail what next. I realized it before exam. जो इस साल ये सब चीजें होने वाली, क्योंकि which is unusual situation. So if you ask me to say, I can put my idea about the cutoff also. So normally the cutoff is around 50%. This year cutoff may come down to 58%. It might be in between 40 to 45%. And when I say cutoff in percentage, that is overall, because there is no cutoff in particular subject and topic. So don't ask me later, अच्छा CAT में कितना होगा, इसमें क्या होगा, उसमें. That's the overall cutoff. Yes,
Sir, I have a question. Yeah, please. Sir, when I completed the GAT exam, it was showing 13 minutes time remaining, and I was just about to finish, and suddenly it showed on my laptop that exam completed, apply for the next exam or next schedule, something like that. So I called in the NIFT number and I asked them that, can you please check that my GAT paper is submitted or not? They said that your GAT paper will be submitted automatically. Have you saved and submitted it? I was like, no. I was about to do, and it suddenly showed that it's completed. So that's what my question is. Is it submitted? This is also, I think we are answering a third time, but yes, you are a very obedient student. I have to answer, and this is the question which has been asked by the many students again in YouTube also, I see. So answer is, you guys can go and check the lives later also, all your friend discussion and all. Not me to speaking, I have your experiences, what I had a whole day since morning. Like, I think I had a lesser sleep than you guys. I slept around 1, I woke up 3:30, because the exam day is always like, very precise day for me, because some kids have said that, sir, aapko kya tension hai? So I have a tension about those all students who have maybe not given the exam, and I said that, okay, maybe aap de sakte ho, ऐसा हो जाएगा. Yeah, I'll not take any name, but जैसे कोई रोड आया आधे घंटे से पेपर सबमिट नहीं हो रहा है, so that's obviously disturbed, because we are connected from a heart and we know the value. So I have explained, and this was often with every, I think second or third student on an average has faced this problem कि उनका पेपर automatically submit हो गया. When it says submitted, I know, I mean, this very understood word, but still when you are writing the exam, so pressure is different. That means your exams have been completed. वो खुद ब खुद सबमिट होगा. वही उन्होंने भी आपको एक्सप्लेन किया, वही आप मेरे से भी पूछ रहे हो, सर ऐसा बोला, हुआ कि नहीं हुआ. But it's just for a sake of satisfaction. ऐसा होता तो अच्छा, नहीं ऐसा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ. So nothing to worry at all. That's what we are here. We decided to be live, take all the question of our student also, whomsoever meanwhile want to join, and we are going to discuss about what next also. आगे कैसे प्लान करें अभी सब. तो एग्जाम हो गया. So what all answer? See, I got same question, sir. वो exam automatically submit हो गया. Some random number just now pop up on my screen. So obviously this is going to happen. There's a passage, there is a maths questions and all. Screen चली गई. 29 पे ही screen चली गई. I don't understand 29. Maybe time was still 4:30. So 4:29, I think he's saying the screen went. So वो ऐसा काफी normal है. CEED के एग्जाम में, UCEED के एग्जाम में, if anybody has given the exam for IT, they know they take online e-exams where your section get changed automatically exam के बाद वैसा. But yes, they should have, okay, they should have on this thing is जो paper उसमें एक UI add करना चाहिए था. It's just a recommendation for if in case the exam pattern will be on same way. So question paper you cannot go back, but there has to be a last button has to come. Okay, you want to submit now, back जाने का ऑप्शन नहीं रहना चाहिए था, but submit का एक बटन आना चाहिए, या only submit का बटन आना चाहिए था students के लिए. So that means for their satisfaction it is. तो अच्छा नहीं मैंने submit कर दिया. This can be one of the solution for this particular question. Thanks. So let's plan for what next. Wednesday we are having a very special session. Monday, Tuesday obviously regular class. Wednesday I have invited some institution mentor to teach portfolio that we are planning to keep 7 p.m. and obviously all of you are invited to join that session. उसमें हम लोग आगे थोड़ा तो धीरे धीरे क्या होगा, we'll move forward, we'll move on next direction, next step. Okay. सर मेरा भी एक क्वेश्चन है. हाँ जी बताइए ना, कौन है आप? सर दिख नहीं रहा मुझे आप. सर मैंने भी मेरे 1 बजने से कुछ सेकंड पहले ही पेपर ये कंप्लीट हो गया और मैंने सबमिट नहीं किया है, और फिर ये लिखा भी नहीं है कि सक्सेसफुल कंप्लीटेड, इस टाइप से कुछ आया भी नहीं है, और फिर डायरेक्ट कैट का ये अपलोड करने के लिए फोटो वगैरह आया था, तो फिर मेरा सबमिट हुआ होगा या नहीं? Sir, I guess you're on mute. First half में I have explained. आप लोग को सुनना होगा ध्यान से. Understand post exam you are a bit worried or tense.
मेरे पास भी जो आंसर है those are your experiences only. All right, first of all, whenever you ask the question, there are so many students, I get confused. Please come with your video so you will be in highlight, we can see you. जो अच्छा नहीं आप कौन हो, तो I went and I checked, there is a Nidhi is talking here and she has asked the question, जो मेरा पेपर सबमिट हुआ या नहीं हुआ या वो एरर क्या था, राइट निधि, यही आप पूछ रहे थे? यस सर, और बीच बीच में ये भी लिख रहे थे एग्जाम देते वक्त कि यू आर नॉट क्लियरली विजिबल योर, तो मैंने लिखा भी उनको कि ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, तो वो लोग बोला फिर से कि फिक्स कीजिए अपना लाइट वगैरह ये सब, तो फिर मैं तो उठ के अपना लाइट वगैरह फिक्स कर नहीं सकती थी, तो फिर मैंने ओके पे क्लिक करके फिर से एग्जाम दे दिया। फिर बार बार यू आर नेविगेटिंग इस टाइप से कुछ कुछ मैसेज कर रहे थे कि योर मार्क्स विल बी कट ऑफ, ये इस टाइप से कुछ कुछ मैसेज कर अच्छा, रहे थे। आपका एग्जाम बीच में बंद तो नहीं हुआ ना? आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बट पर मेरा बैटरी उस टाइम लो हो गया था, तो फिर मतलब अच्छा, फिर आप एक से बार वीडियो ऑन करो अपना, कितना लाइटिंग है उधर, अभी ऑन करो, क्या हो रहा है? आर यू स्टिल क्राइंग, इसलिए नहीं ऑन कर रहे हो? दैट्स व्हाट वी आर हियर, डोंट वरी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, दिस वाज द लाइटिंग इन योर रूम, राइट? सर मैंने लाइट भी जलाया, लाइट भी ऑन किया। कोई बात नहीं निधि, आपने कितना क्वेश्चन करा ये बताओ? ये 50-60 के अप्रॉक्स। 150 में 60 क्वेश्चन करा आपने? हाँ, जितना भी किया मैंने ये कॉन्फिडेंस के साथ किया, मैं भी जितना भी किया उतना गलत नहीं होंगे। Okay, no worries. That is the secondary discussion. We might comes later, post your result for a counseling support. We help a student to get the all possible best colleges. Here you have Mukesh sir, here you have Deepthi, she is in NIFT Bangalore BFT department. Mukesh sir I name because he is a BFT pass out है, वो alumni है BFT से। तो आगे हम आपको guide करेंगे. We have all the department and all kind of faculty mentors in team. Now coming back to your questions, this section, this particular hour, please share with all the students what I realize and I've seen. जो there is a bug, few बच्चों ने मुझे कॉल भी किया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, MFM, BFT और MFT, इन बच्चों के साथ क्या हुआ? While writing the exam post submission, they were telling you to upload your seat, right? This was you are also getting the message, Nidhi? No, yes sir. No, yes, क्या बोल रहा हूँ? मतलब 1 बजे के बाद क्या मैसेज आ रहा था आफ्टर 1 PM? उसके बाद मैसेज आ रहा था कैट वाला का जो पार्ट था कि योर नेक्स्ट एग्जाम विल बी स्टार्टेड, यू अपलोड योर PDF, इस टाइप का कुछ। हाँ, वही मैं भी बोल रहा हूँ ना, आप सुनोगे ध्यान से तब तो। आई एम सीइंग द सेम थिंग्स, सो मैसेजेस वाज कमिंग, पीपल आर गेटिंग अ मैसेज टू अपलोड योर पेपर, है ना? क्योंकि क्या हुआ, साइमल्टेनियसली 2 एग्जाम चल रहा था, एक बीडेस का कैट हो रहा था और BFT, MFM और MFT का गैट का पेपर हो रहा। तो एज पर योर दिस यू हैव सबमिटेड द पेपर, बट मेनी स्टूडेंट इन गैट फेस दिस प्रॉब्लम। तो ये मशीन जनरेट नोटिफिकेशन होते हैं, तो दे आर सेंडिंग अ सेम नोटिफिकेशन टू एवरीबॉडी। बट जब कुछ बच्चों ने कॉल किया, इवन वी कॉल द मैनेजमेंट, सो दे सेड दैट इफ योर एग्जाम इज फॉर BFT, MFM और MFT, दिस इज हैज बीन कंफर्म। उनको ये दिक्कत नहीं थी। अभी सिद्धिदात्री ने यस करके लिखा है। आई वांट सिद्धिदात्री टू शेयर हर एक्सपीरियंस। कुड यू प्लीज कम एंड एक्सपीरियंस, आप थोड़ा शेयर करोगे क्या हुआ था? Hello, sir. Good evening, Siddhidatri here. Good evening, Sir, good evening, Siddhidatri. the paper went something really. Are you all crying? Yes, sir, I cried. Yes, sir, I cried. That I know. अभी तो mood ठीक है ना? Sir, not really, sir. I don't know what's gonna happen. And मेरे को यही पूछना था, सर, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपने पहले भी बताया था कि आप MFM पेपर्स कभी-कभी आप ज्वाइन करके लिखते भी हो, तो if you have हम solved the बात करेंगे, paper, हम बात करेंगे. It's not about what do MFM you only. think? Once we have a long discussion, I'm getting And many sir, I students. also want to ask कि BFTech और MFTech के कैसे हुए पेपर्स, since I don't know any of them. हाँ, अभी सुनोगे आपने आपको पूरा पहले का सेशन, अभी का डिस्कशन आगे दीप्ति बताने वाली है, BFTech वाले बच्चों से बात करेगी, ओवरऑल सब पता चल जाएगा आपको। चलो अभी जल्दी से आप जो है कैमरा ऑन करो, देखिए आप अभी कुछ खाया कि नहीं आपने? आपका एग्जाम तो बहुत पहले खत्म हो गया था। सर नहीं
अरे अभी आज तो सेटअप भी बढ़िया होगा, आज तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं है मेरा इंटरनेट खराब है, आज कोई स्टूडेंट नहीं बोल सकता इंटरनेट सर सही नहीं, नहीं बहुत आंख वांख लाल है एकदम नहीं। रो के हालत खराब है। ऑल राइट आई अंडरस्टूड, बट नथिंग टू वरी अबाउट इट, हम डिस्कस करेंगे। देयर इज अ सर्टेन एनालिसिस कुछ पेपर का है। आपने कितना क्वेश्चन करा आप भी बताओ, तब तो लेटर विल अनाउंस ऑल दिस। सेशन के आगे वाले पार्ट में ये सब अनाउंस करेंगे। आई कैन सी बीएफटी ही ना वेंसिनो, अच्छा सीनियर यहाँ पे, मैं भी बात करूं क्या कैसा हुआ है पेपर, मिलेगा कि नहीं। हिना आपने बीएफटी दिया ना? Yes, sir. See, I'm still getting a calls. Deekshita is also come Yeah, forward. so excuse me, we are getting like so much questions on YouTube for like Yes, cutoff please, and please. answer keys. Yeah. So can you say something like about answer keys and like what will be the cutoff according to you? सर मेरा एक क्वेश्चन है। I just got a call from live. I suggest you a student from live, if you want to ask the question, you are suggested to come on ignite_India. This is our Instagram. There you write your question. You may download the app also. There also in chat you can write to us. You can write in a YouTube comment here in live and later in live. Another way is we will write it down the number also. There is a number 88454480. That's our Ignite India number, or the one number which I have, that is 9972046911. Here you can send me on WhatsApp. We would love to take all the question. We are taking it. ये जो क्वेश्चन है आंसर की का क्या होगा, then about the cut up, we need more solutions, we need more suggestions. अभी मैं बच्चों का मिल रहा, मैं आप लोगों से भी वही पूछ रहा हूँ, तो आपने कितने क्वेश्चन किए, पर कंफर्टेबल इनफ यहाँ पे बताओ, नहीं तो आप मुझे भेजो। बेसिस ऑन ऑल दिस ओनली वी कैन टेल यू। मुझे और थोड़ा एनालिसिस का टाइम दो, तब तो बताओ मैं क्या होगा। तो यस, व्हाइल टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू विल गेट द आइडिया। हिना आप कुछ बता रहे थे? सर एक्चुअली वहाँ पे लाइक जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड आता है ना, वो दिख ही नहीं रहा था। इवन इफ वी मार्क फॉर स्किप द क्वेश्चन, तो भी वो ग्रीन मार्क ही दिखा रहा था। तो लाइक लास्ट में एनालिसिस करने नहीं आया कि कितने अटेम्प्ट हुए, कितने छोड़े, क्योंकि सर जो पीडीएस में भी यही हो रहा था सर। हाँ, कई लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हुआ है, दैट आई हैव हर्ड ऐसे। यस, आप क्या बोल रहे थे? विल टेक टुगेदर, आप बताओ। सर जैसे हर साल सर आंसर की ऐसा आती है, तो इस साल आएगी या नहीं? क्योंकि आंसर, चलो ये तो मैं अभी बता देता हूँ। यूट्यूब में भी बच्चे पूछ रहे हैं आंसर की का क्या होगा, आंसर की का क्या होगा। आपके पास है क्या आंसर की मैच करने के लिए? बताओ कैसे। हाँ सर, वही मेरा डाउट था कि कुछ है ही नहीं मैच करने के लिए, तो आंसर की का क्या करेंगे? आंसर की आके होगा कहाँ, क्वेश्चन कहाँ है? तो इफ दे विल लॉन्च और दे विल गिव क्वेश्चन प्लस आंसर बोथ, और नहीं आएगा दोनों नहीं आएगा। हर साल आता था, ये राइट नहीं है। यू आर राइट, पिछले 2-3 साल से आता था। एंड आई अप्रिशिएट इफ यू गाइज विल बी लाइक दीक्षिता, एकदम पानी बॉटल, खाना, आराम से रिलैक्स, है ना? ऐसे टीना बहुत सीरियस है, कुछ खाने वाने का लेके बैठो, वीडियो ऑन करो, हमें लगना चाहिए जो नहीं हम आपके साथ हैं। सबावा कौन था, आई डोंट नो व्हाई। नो सर, खाना वाना हो गया, बीएफटी का लाइक बहुत पहले खत्म हो गया। पेपर एट 1 o'clock ओवर हो गया, बट मेरे को पता ही नहीं चला 6 से अभी दोबारा 6 बजने वाला है, कैसे हो गया, है ना? सिंस मॉर्निंग पीपल वर क्राइंग, जिनका पेपर नहीं हुआ था, जिनका एग्जाम नहीं हुआ था। एंड आई एम सो सॉरी, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, सो डोंट माइंड एंड टेक ऑन personal anyone who is there in YouTube and here in session. We are just here to make sure that जो कितना relevant ये discussion हो सके, कितने लोगों तक पहुंच सके, और हम एक दूसरे को बेनिफिट और रिलैक्स कर सके, है ना? कि जो होना था वो हो गया, बट एक रियल एनालिसिस बहुत जरूरी है। व्हेन इट योर फीडबैक एंड थिंग्स विल कम। ओके, लेट्स टेक अ यस का क्वेश्चन। सबा सर क्यों पकड़ के बैठे हो आप, क्या हो गया? ऐसे बैठो, बढ़िया है बस। यस, कुछ नहीं ना? गुड गुड। यस सर बस वही था आंसर की के लिए, बस और कुछ नहीं था। Sir, about the answer key, it was given in the hall ticket that they'll put the answer key and or the responses that we gave on the website. That is what it was given in the hall ticket, like the admit card. Sorry. हाँ, तो वो आएगा, क्योंकि ड्यू टू द आरटीआई पॉलिसी दे स्टार्टेड गिविंग फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, तो वो आएगा। और अब नाउ आई वांट
Deepti to take YouTube question. Aditya, Deepti, and you all start the next set of discussion. Sir, there's I'll one be more thing. continuing it after 15 minutes. मैं भी इस session में हूँ, but I'll be continuing it. I will keep taking question in between. Yes, कोई कुछ बोल रहे थे, बताओ. Yes, sir, me Siddharthi. So I wanted to ask how can they ask questions of 2019, 2006? Like Kiran Desai ने कौन सा book I लिखा think I have 2006 said that में? earlier also in disclaimer. जो NIFT का GK you cannot predict. So one way is to work on current affair, work on all these things. But earlier also this happened. This is quite normal in NIFT. They ask GK from any random section. और अगर वो random है तो वो सबके लिए है. It is not like that जो वो आपको क्यों पूछा गया है. इस पे I mean I understand this is valid question, but इस पे बात करके कोई ऐसा नहीं है. They wanted to ask. अच्छा मर्जी है दे दिया उन्होंने. Okay, but this is quite common. Yeah, Deepti. Yeah, one important question we are getting on YouTube, like one girl is asking, what happens when we color the question when they asked us not to do? Will they deduct the total marks? See, you will get some marks for all the drawing question. All right. And this year, first round, especially a student for MFM, MFT, M design, B design, all of you will get the rank. All the students will get the rank. Keep note. Last year, you have heard, some students are not getting selected. This happened, that happened. Most probably, likely, slightly 90% above students, or maybe all of them. Because they want to give a chance to next round. This was happening in UID exam also. I discussed the management. The pattern has been followed by colleges, right? So they said that, sir, because online exam was there, so we want to see them their effort in during the portfolio and PI and other round. Or very early, looking at the pattern, because these are professional colleges, so they don't want to delay their academic. After this pandemic and all, still NIFT, all things are on time. There's nothing delayed in this particular university and industry, because they have to send a student in internship and other places, right, Deepti? आपके senior और college में time से कर रहे हैं सारा DP internship, है ना? So Deepti is here from NIFT Bangalore, so she is aware about her senior. In fact, her academic also overall things might be other university colleges में delay होगा, but यहाँ नहीं. So this exam result and things, everything is on time. और जैसा उन्होंने मेंशन किया, then it will be there on your website also. आपको वो भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि one having a right to file RTI, अगर नहीं आया आप RTI कर सकते. So why to take? I mean they will put transparently आपके लिए, तो आप खुद से check कर लो, देख लो. So just wait and watch इस particular situation में. और once again coming back to Siddhidatri question which she has asked earlier. So क्वेश्चन था, क्या था आपका सिद्धिदात्री, क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? हेलो, I think she is. Yeah, sir, I guess some network issues are there from our side. Yeah. Many students are asking like on YouTube about how, when the results will came out. So I guess as Krishna sir told us, it will be on time, nearly in March or so. Yeah, वो दिया हुआ है, डेट इनका दिया हुआ है, कंप्लीट एकेडमिक कैलेंडर डेट दिया हुआ है, रिजल्ट टाइम हैज बीन मेंशन इन द मार्च. तो जब इतना सब कुछ होने के बाद एग्जाम अभी लिया उन्होंने, तो दैट्स हाउ द रिजल्ट विल आल्सो कम, एंड दिस इज ऑनलाइन, सो इट इज बिकम मोर स्मूथ आल्सो फॉर देम. हार्ड कॉपी पेपर को एनालिसिस करने में टाइम लगेगा, है ना, या गैट का रिजल्ट काउंटिंग करने में टाइम लगेगा. ये तो और इजी है जो आपने इसमें दिया है, टू फाइंडिंग योर रिजल्ट. तो रिजल्ट का तो मुझे नहीं लग रहा है जो देयर हैज टू बी एनी डिले. Yeah, with new UI, there's a new technique, so it might take some time for management in some aspect, but nothing to worry about it. Okay, then Hina, Aditya, Sabha, Dikshita, Sabha has asked me in the message, sir, आज discussion session रखो ऐसे. मैंने कहा ये लो link आप शुरू हो गया है. So you guys ask, we'll provide you. Again, I got some PDF. So let me analyze students' number of question. You guys can also answer me in chat. मतलब मेरे नंबर पे 997220469111 पे जो आपने कितने क्वेश्चन करे हैं, so that better once we come to the end of the session, where better in a next half what we have discussed. एक तो जो है आगे सेशंस कैसे होंगे आपके, देन पोर्टफोलियो PI ये सब का क्या प्लान है हमारा, प्लान बी का आपका क्या प्लान है, प्लस इस साल के प्रॉब्ली कट ऑफ फॉर ऑल एग्जाम.
So I can get the probably cut up. जैसे मैंने सुबह से शाम तक आपके साथ एक्सपीरियंस किया, तो I know everything. Submission कैसे हुआ, एग्जाम क्या हुआ, क्या स्टेप था, क्या बग था. So that's how another 1-2 hour and sometime whatever experience you will share, उसके basis पे ही हम बता पाएंगे. I don't have any magical fluid. I'm not somebody who can just put random analysis. So it's like a more primary research and primary data collection, what you guys will give me right now. So you can keep writing it, all the YouTube viewer also. दीप्ति आप नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए 9972046111. Okay, on this number you can write your question also. You can write your question which you have attempted, if you have idea, or the course name, कौन से course के लिए, or if any question you have related to plan B or portfolio, PI, situation test, GDPI, that also you can ask me here. And you are you can press the bell icon button so that similar kind of session, because we continue session until your admissions, post admissions also. कई सारे ऐसे sessions हैं जो हम बच्चों के industry mentorship और इसके लिए आता है. Here I think all the students they know Deepti. I think you write in YouTube, है ना. आपने यहाँ तो ये लोग aware हैं, सबके पास ये number होगा. 5 to 10 question, I'm not sure. Yeah, I mean whatever number, I'm not going to tell anyone name, anything. You'll be surprised to know in some particular category. I'm not going to name again the category also here. That's more individual discussion. The students are having in GAT 10 to 15 marks also. They have cleared the first round previous year. 10 marks, 12 marks, 15 marks. क्योंकि आपने CAT में बैलेंस करा, तो फिर सिचुएशन टेस्ट में अच्छा करना. जैसे आपने suppose you got score 30 marks in your paper out of 150. तो आगे कैसे करना है? How you will score? So all this part of my part I'll obviously discuss, but before that I want to have more discussion from student side here. And Deepti will take a questions. You all will answer, suggest. क्या similar situation आपके साथ भी हुआ था? तो over to you guys. And yes, I am there already. I'll be there. Now we'll take for BFT. We'll take some questions for BFT. So Hina is there with us. She gave the exam for BFT. So how's the experience, Hina? How's the exam, and how's the difficulty of the exam? How you rate it? और आप भी बताओ दीप्ति अपनी experiences college का. They would love to know, all the students. Sure. First, Hina will take your answer. Yeah. For the maths and reasoning part, it was easy, and in reasoning, most of the questions were on alphabet test only, major questions. When I attempted mock test and all those, I experienced 2 to 3 questions, but in the actual paper, it was 7 to 8 questions were definitely there from alphabet test. And GK was a bit hard for me, but I somehow managed to mark up some answers. I took a risk, and I don't know what will happen. So how many questions you did in your exam? How many questions you attempted, Hina? I don't know actually, because the system wasn't that good. If we skip the question, it was showing green color only. So I think 90 to 110 somewhat questions. Okay. So the main difficulty is the color is not showing on the exam, right? Yes. Okay. So how about other things like English or something? What was the things you like the most? What were the easiest things in the exam, or moderate or something? Can you rate by sections? For me, reasoning was very easy. Maths 8 or 9 out of 10. It was easy. Only 1 to 2% for me it was hard, some of the parts. And GK was tough for me. English was also good. Okay. So what about others? So we will take some questions from YouTube, about BFT. They are saying English portion is very hard, or maths questions are a little bit difficult to solve. So what's your take, Hina? I think maths was easy. Okay.
We have a topper from math, guys. No. Like I have practiced maths and like maths was easy for me because like they were basic questions and general reasoning also basic questions were there. But GK was hard for me and in English like 2 or 3 paragraphs were easy for me. The ones with the decision making, the major objective and minor objective questions type, those were a bit hard for me because I didn't practice it much. That's why. So actually, guys, like the YouTube people who all are asking for BFT and like any exam. So actually, it depends, I guess, on person. If like someone like finds maths difficult, someone finds English difficult. So yeah, and like all I saw, like many chats are related to cheating and all. So guys, let's not talk about that things. Let's focus what we did in our exams. So let's focus on what you did. Don't regret about anything, just like enjoy. The exam is over now, तो अभी enjoy करो, इन सब चीजों पे focus मत करो, because ultimately जिसने अच्छा score किया होगा उसी को college मिलेगा, right? And like I can completely understand तुम लोगों का situation, because I'm a person जिसने exam offline दिया था and college अभी online चल रहा है, तो it bit difficult, like very difficult for us to like indulge. But yeah, it's okay. हो जाएगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी. And like many of the students are saying like NIFT का exam अच्छा नहीं था, उनका like source अच्छा नहीं था. ये अभी जो भी है जैसा भी है manage करना पड़ेगा, guys. We don't have any much options. And for situation test also, I guess corona situation पे ही depend करेगा सब. मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन हो जाएगा इस बार सिचुएशन टेस्ट, बिकॉज जैसे अभी जीईडी का भी एग्जाम सीईडी का भी उन्होंने ऑनलाइन लिया है, तो आई गेस कंडक्ट हो जाएगा. सो होप फॉर द बेस्ट. मे बी विल सी like what will be the corona situation in the next month, so it will depends on that only. And guys, बस अभी थोड़े टाइम के लिए chill करो, and we will discuss what we can do next with Krishna sir, like in short period of time. So about my college experiences, I don't have much experiences in my college because of the corona thing, you all know. अभी जैसे तुम लोगों को एग्जाम के लिए डिफिकल्टी हो रही है, मुझे कॉलेज में एडजस्ट करने में डिफिकल्टी हो रही थी. इट्स लाइक कि ओ माय गॉड, आई एम मिसिंग एवरीथिंग इन माय कॉलेज. लाइक निफ्ट में आने की इतनी एक्साइटमेंट थी, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हो रहा है. बट या इट्स ओके, अभी ऑनलाइन जो हो रहा है. बट अभी मैं बैंगलोर में हूँ, सो आई सॉ माय कैंपस 2 months ago for the very first time. I'm quite happy that I'm here, a part of NIFT family. And I'm also from BFT department, so you guys can like ask anything if you want to contact me. And yeah, now we will go with MFM students. We have 2 MFF students, I guess, with us. So let's talk about what was their experience during the exam. Let's go with Fida Faisal, and then we will take one more experience from MFM. Yeah, Fida, are you there with us? Yes, ma'am. Yeah, so let's talk about it, and I want like your guys' videos on while talking. So yeah, Fida, what was your experience? Hello? Yes, ma'am. Yeah. I just felt overall the first 2 sections, they mixed up the reasoning and the maths questions, making everyone confused about what it was actually supposed to be. So like what was your difficult part? Like जैसे अभी हमने देखा कि किसी को questions mark करने में color नहीं दिख रहा था BFT के students में, and in the designing we saw like कोई submit नहीं कर पा रहा था या अपने आप automatically submit हो गया था. तो what was your difficulty during the exam? Hello, I guess some network issues are there with Fida. So yeah, can we talk to Siddhi Datri for MFM? Like the same question, can you answer, Siddhi Datri? Okay, guys, I don't know, like maybe some network issues are there.
Can you tell a little about BTS? Yeah, what you want to ask, tell me. Like, GAT part didn't go that great. Nana, can we get your video on, please, like, so that you can show, we can show your screen. Am I visible and audible? Yeah, Nana. Yeah, so like the GAT part wasn't that well, and like it was not good. So how's it gonna be? So, like, what difficulty you faced for the GAT portion? Like, how difficult you like find it? Which portion is more difficult for you? Yeah, so firstly, math is already tough for me, and the paper it was even more tough. And like the strong part was English and reasoning. And in English, I don't know what kind of passages we had. Like it was really, really lengthy. And even after I read it for around 4 to 5 times, I was still wondering what the question is and what the passage is. GK went well, for me at least. I don't know. Everything else except for GK was like okayish. And reasoning was supposed to be almost 15 questions, and we got only like around 3 to 4 questions, I think. Yeah. And that was like Like, how many questions you attempted, Nana? I'm not sure. I was in a complete, disturbed kind of thing, back and forth, back and forth. So I've just attempted a lot of it. Let's see what happens. Nana, Yeah. what you attempted in cat portion? Which part? मतलब first part में कौन सा, second में कौन सा, third में कौन सा? Should I say it now? हाँ, I want to know. So in the first question, I did the night question, the Winter night. Yes, winter night. And in the second question, I did the apple getting rotten from, fresh to this thing. And the third question, yeah, I did the fabric one, like best out of waste one, product Okay. design. Okay. I think cat was pretty good this time. Nah. So Yeah, it was. That's it. Mom, I just want you to tell me that what, GAT part kaise evaluation hoga, I know what's gonna happen. Yeah, Nana, so don't worry. अभी जैसा हुआ है अच्छा हुआ है. Let's hope for the best. तो अभी स्ट्रेस नहीं लेना है एकदम भी. अभी देखते क्या रहता है ना? अभी हमारे पास सिचुएशन taking stress now. It's submitted now. क्या स्ट्रेस लेने का कोई फायदा नहीं है ना अभी. हमने अपना बेस्ट दिया, दैट व्हाट ऑल मैटर्स. सो या तो अभी लाइक आप मुझे बताओ थोड़ा कि अभी आपके आगे क्या लाइक सिचुएशन या ड्यूरिंग द एग्जाम लाइक व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस. आप स्ट्रेस आउट कर रहे थे या क्या, लाइक आपने कैसे मैनेज किया उस चीज से, कैसे कोप अप किया, है ना? बिकॉज जैसे हमने बहुत सारे लोगों को सुना अभी बोलते हुए कि वो लोग बोल रहे थे ऐसे सबमिट नहीं हो रहा था या अपने आप सबमिट हो गया. तो लाइक आपने कैसे डील किया उस सिचुएशन से? So for the cat part, okay, I'll be very honest. I did the first question and then I realized that rough sketching करने के बाद I didn't have to color it. I colored it. I completed the question and then I realized hopefully I had practiced for like 4 questions in 3 hours. So I completed second and third, and then I went back to the first question, completed it without color, black and white. And in the submission part, I faced a lot of problem. I created the PDF, वो upload नहीं हो रहा था scan करके. Lot of things happened, and then though they were giving me the warning, I went to Gmail. I uploaded it from files, not from the scan thing. So I started crying also. I called sir and all that happened. Like, I was very scared. It was popping up like 2 minutes left, 1 minute left. And I'm like, ये close हो गया तो this is also gone. So that was all, like paper was good. And in GAT part, I lost hope after like 50 questions. I was like, how much ever I can do, I'll just complete it and just leave from here. So yeah. Okay, let it be now. So like anyone else who have any questions, or shall we start taking questions from YouTube? Jennifer, Kirtana, you guys want to discuss like about your experience during the exam? Madhu,
Dikshita, yeah, we talked to Dikshita already. Neha, Nitya, Pooja, anyone, guys? Okay, so many people are asking like for MFM. Guys, we have 2 students who gave the exam of MFM. I guess due to network issues, they're not available right now. We will take their call when they'll be here in like 5 to 10 minutes. And other questions on YouTube are like related to the same thing, the cutoff and all. So guys, chill. अभी थोड़ा chill करो. इतना जल्दी मत सोचो कट ऑफ एंड ऑल के बारे में. आ जाएगी, टाइम पे ही आएगा सब कुछ डिले नहीं होगा. एंड कृष्णा सर ने भी बताया उनको लाइक थोड़ा टाइम चाहिए अभी एनालिसिस करके हम लोग आप लोगों तक पहुंचा देंगे कि व्हाट अकॉर्डिंग टू अस विल बी द कट ऑफ. सो या उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अभी YouTube से. लेट मी Ma'am, they want to see paper. Oh, is it? आदि अपना क्वेश्चन आंसर शीट दिखा दो लोग को There some messages. Can you show us your drawings? Can you show us your drawings? So Nana, I will suggest, can you show your drawing, please? You can show your drawings. Na, I'm from BFT. You're from design department. You can show your images. What you did in CAT exam. Show us all. Okay, fine. Yeah. I will show one only. I'm not going to leak all my papers because it's so. It first was like I attempted the first and second part. It was afternoon coffee with a friend, and we don't have to color it. So I made this. If you guys are, It's pretty. Yeah, it's visible. and I वहाँ पे लिखा था I have to name a title, so I titled it as Evening Shadow. That is, I think it's afternoon time, evening time, and it's in black and white. So I suggested Evening Shadow. So let's take Dikshita and Saba's call for this image you made. Yeah. What about you, Dikshita? What do you think about it? I mean, I did the other question, so I can't. Okay. But I like it. Okay. What about you, Saba? I also attended the third one. I did not attend this one. We have we have one more student. Chandni, you want to say something about Aditya's work or anyone? Binitha, Jennifer. I had some network issue. Adi, can you show it once? Adi, show it again. This is the okay. Yeah, I saw it. Yeah, Nana. So what's your call? You want to say something? Do you really think I should? Like, who am I? People are gonna judge me. It's not like about commenting and all. नहीं, it's a review. It's a review from you, Nana. ये जैसे हम लोग ग्रुप में रिव्यू आपस में एक दूसरे को देते हैं. I have a question. So like, the whole composition is like really nice. I liked it, but background में कुछ कर सकता था. So yeah. Okay. White लग रहा है. I have a question. Yes. Yeah. Can you show me that drawing one? Which one? The one which you showed just now. Oh, okay. Yes, you're audible for me. Tell me. In the title you have written Evening Shadow, but after the question number you have written Afternoon Coffee with Friends. So how did you manage to title the drawing Evening Shadow? I need to check your work, Sabha, to answer related to particular questions and what you want to know, because Talking to Adi. am I audible for you guys? Yes, sir. Sir, I was talking to Aditya. So you are telling It's Adi. Adi. It's not Aditya. It's Adi. Adi. Deepti has
taken my name, Krishna sir, so I thought maybe Yeah. you guys want to ask me something. Okay. All right, no problem. Yeah, Adi. Okay, let me tell you what was my concept. That you can see there are two guys. I made two guys. Okay. जितना मेरे दिमाग में आया, there is one movie, Evening Shadow, related to gay movies. So I related to that, and उसमें भी एक scene था. The couples were sitting in the afternoon, मतलब वो बैठे, उसके बाद वो शाम तक बैठे थे. तो I related afternoon और evening में थोड़ा सा ही तो time रहता है, तो इतना तो चल सकता है, I think for me. And Okay, Evening okay. Shadow is not bad. Evening Shadow is a good name. Have you? So I, No, I'm not saying it's bad. I was just asking a question. नहीं, I suggested his name because मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा. So I said that. Okay. I have to give a title, so I gave it. What should I write? Afternoon shadow. Afternoon में shadow कहाँ होती है? Evening में तो आती है. Next, नैना, तुम कुछ बोल रही थी. No, I just asked if you mentioned this part कि movie मतलब afternoon से evening का, you know, your transition बनाया तूने. Did you mention that? No, it's compulsory. It was not written over there. Sure. So that's why I didn't mention there. Sorry for that. I think I did best for myself, and I hope for best. That's it. So guys, 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 I showed my work. I need to see your works also. हमेशा बलि का बकरा मैं ही क्यों बनी? Yeah, Saba and Nena, can you guys show like any one of your answers from CAT? Sure. Yeah. Hello, Shruti ma'am. Hi, Adi. Ma'am, you like my work? I told I get. They are saying it's wrong. See, everybody has done their best, and I think like right now we should focus on the next set of exams and not worry about this part. Yes, ma'am. What we have done our best. Exactly. GAT is only 30% for you guys, so you shouldn't worry about that at least. And as far as the passages are concerned, a lot of people are saying that they had issue in the English portion. It was French or American Revolution related. Yes, ma'am. Passage, ma'am. Passages were And like- Yes, ma'am, it was very There was difficult. some word meanings with really words I had never They heard of. ask the meaning of word. उसमें से हमें paragraph में से उसका meaning निकालना था. No. There were other words. But like we've done passages like that, haven't we? Ma'am, but the passages we did were like, I could solve in 5-10 minutes. These passages were like too much. हाँ, different word. Normal passage अलग होते हैं, ये And passage then थोड़े high. it took me around 10 seconds to read the word only. No, I found the GAT paper, the mock GAT paper that we took much harder. Reason I found the passage really misleading and confusing. And what about the antonym synonym part? It was something that you've never read before, or was it like? Yeah, a few of them. Few of them were not. Okay. So it's a mixed response that I'm getting about English. Some people are like passages were the main issue, and some people are telling me that it was overall the antonym synonyms and passages as well. Yeah, ma'am. And for MFM, everything was messed up. Okay. So Like starting के कुछ seconds नहीं, कुछ minutes, अच्छे खासे minutes लग गए समझने में, process करने में कि आखिर questions किस तरह से दिए गए हैं. ऊपर से question जो slots था वो भी सिर्फ 1 से 50 तक ही दिया हुआ था मेरे केस में, and that was so, you know, बहुत difficult हो In गया my था. case also, the question number was 1 to 50. okay, so it wasn't. And were you able to attempt most of the questions though, or did you have to leave a lot of them because you didn't know? Ma'am, I had to leave. Like उसमें mark ही नहीं कर सकते थे कि mark for review, क्योंकि सारा questions ही नहीं show कर रहा था. So it was like so disturbing कि कैसे, क्योंकि हमारे पास pressure भी था ना कि पूरा complete भी करना है. So did you communicate your issue to the authorities or something about this? Yes, ma'am, but no response were there. मतलब nothing was there. No one were responding the messages or anything. So
That's quite upsetting. Actually, But- I also, ma'am, yeah. actually, I also called when I was uploading PDF. I Hmm. called them and they were saying, this now server issue, it's your issue, do yourself. And they cut the call. I was like, ये NIFT कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? And they didn't listen to your concern also. I called to another number. मतलब they are passing the call to another. मतलब कि they are passing to call one ma'am, then one sir, and then in last one sir replied me, just submit it. You are done. I want to ask something else. They answered me, just submit it. And then I didn't call and I did it by myself. That's why I submitted at 12. That's jaldi. Ma'am, in my case, in the CAT paper, I like called them thrice, didn't pick up Yeah. once also, and they like put in the admit card that you can even chat. I put so many texts also for like 20 messages. No one is replying in chat. I got one reply, what is your issue? And after that, मैंने उनको दोनों टाइम हेलो हेलो कहा, मैंने बोला प्लीज रिप्लाई कर दो, ये भी लिखा, but they didn't reply. They didn't reply to that also. So see, there must be a lot of queries that they must be facing also, no? So what we can hope for is like as much as you were able to do, and they will understand your concern also, right? So they'll work from that point onward. So let's see what happens. But right now, what you can do is start preparing for the next part of it. So stop worrying about what is done, and now let's start worrying about what we can do. Ma'am, did you mean What if we don't have any hope कि कुछ होगा अच्छा? It was so disturbing. Like reasoning का भी questions. No, there has to be something. If a lot of people are facing this issue, obviously they will have to consider it. If some people are not even able to attempt all the questions, then it's not fair, right? So maybe they'll work with some. Guys, just a little request. जो भी अभी बात कर रहे हैं, query पूछ रहे हैं, please अपना videos on करके करें, please. It's a request. वहाँ पे pop up हो रहा है, तो we want your videos to come on the screen. हीना, As you already are right. मुस्कान, शिवानंद, नित्या, पूजा, रशिका, मृदुल, प्रेरणा, भाई क्लास में ऑन करते हो, यहाँ पे भी कर दो. And guys, जो हमारे साथ YouTube पे अभी हमें follow कर रहे हैं, please guys, I want you guys to like our video, subscribe our channel, because we will continuously providing material for like NIFT also, and अभी हम लोग PD and situation test के लिए भी start करेंगे classes. So update रहने के लिए please like करें, share करें और subscribe करें हमारा channel, और notification bell जरूर press कर लीजिए, please. ताकि आप लोग नोटिफाई होते रहें नई चीजों के लिए. So yeah, please subscribe our channel. Yeah, any doubt you guys have? As you know, Shruti ma'am is there with us. Shruti ma'am, like, can we talk to you? Like, आपको जितने भी बच्चों का सुबह से response आ रहा है, like क्या बच्चे बोल रहे हैं आपसे? Mostly क्या queries थी? See, they've been telling me basically about the portions that I take for them. So some of them asked me about the CAT review, and then some of them asked me about the English part. So it was not much about what I could give inputs there, but they were just telling me how the exam went for them. So most of the queries that I got were related to what to do next. Like if I have to think about it. So I think that was pretty much it. But mainly when it comes to the reviews that come about the paper, it is generally that the passages were the problem. They were way longer than what they were expecting. And other than that, antonyms, synonyms were a lot, and like a lot of difficult parts were there in GK as well. So that's the general review that I've gotten so far. Yeah, मैम को कैट एग्जाम लाइक बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि इट्स वे टू इजी, उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. So it was like, तो आपका क्या take है? CAT actually they were saying it's way too easy, but the thing about the easier questions is that you're supposed to attempt them a little more creatively, because everybody would be thinking of the same things. So there you have to
rise above the obvious, obviously, and that is the main thing, right? So the easy part of it is definitely from one perspective, which is like they're not thinking about the comparison. So how other people perform would also define. So if they're finding, what I feel is that even if they're finding GAT paper or GAT part difficult, they should also think that maybe if this is the thing that they weren't aware of, that a lot of people wouldn't be that good at it either. So they shouldn't be worried about that much that they start like feeling bad about it and are not able to prepare for the next stage of it. या सो मैम लाइक बहुत सारे बच्चे अभी ये भी बोल रहे हैं कि लाइक देयर चीटिंग हुई थी एग्जाम में एंड ऑल्सो अभी आप वो क्या बोलना चाहेंगे बिकॉज आई डोंट थिंक देयर इज नो पॉइंट टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज अभी जो हो गया है एग्जाम हो गया है Cheating is one part which is definitely frowned upon, and I totally stand against it. And I told my kids, do whatever you understand of it and do not cheat, because if you are found out, then whatever you know of your, like whatever you've done from your side also, that also stands negated, right? So you shouldn't ever take that route, and I'm sure that the students have not done anything like that. So if you're true to yourself, then you should be able to become a better designer as well, right? Yeah. So like ma'am, any query you got from MDes students or like? It was mainly, there was no query. They were just telling me how difficult the passages and English part was for them. Yeah. So yeah, that was pretty much it. Okay, so any student from MDes or MFM guys? If you have any review that you want to give us, you're welcome to do so. Ma'am, actually my passage was also lagging. Like last में सारे passages थे and that was so that was lagging बहुत ज़्यादा. So were you बहुत able to मेरे select the answers? नो मैम मेरे 2 पैसेजेस में ऐसा हो गया था कि आधा इंग्लिश था और आधा हिंदी था. Like the passage was not complete. So I had to, you know, I was facing problem to understand the passage, and then I realized that the passage only, you know, not complete. So that was something I faced, and because of all that disturbance, I missed the last 2 questions. Like no, not 2 questions, like last 8 questions. Okay, so that all right. So, but that is not a lot of marks. But then again, it's very upsetting. Did you report this? Yes, ma'am. I texted them a lot, but no response was there. No, nothing was there. So what to do? I don't know. Last के मतलब case studies were easy last में, but I could have you know attended that, but time ही नहीं मिला MFM के लिए. Yeah, I'm talking about MFM only. Time ही नहीं मिला. And yeah, that's it. And maths के questions तो लग रहे थे कि 10 की जगह पता नहीं कितने सारे questions दे दिए हैं उन्होंने. मुझे 10 से तो बहुत ज्यादा लगे. I don't know why. Like math questions were difficult as well. Difficult. I will not say that much difficult because, but questions. मेरे हिसाब से मतलब count करने का तो time नहीं मिला because questions were so randomly placed anywhere कहीं पे भी. So उसका तो time नहीं मिला, but बहुत ही लगा कि 10 से तो ज्यादा था डेफिनेटली इतना. एंड रीजनिंग वाज आल्सो बिट कंफ्यूजिंग क्योंकि जो हमने पढ़ा लाइक बेसिक जनरल रीजनिंग उनमें से बहुत ही कम क्वेश्चंस आए. लाइक सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशन, दैट्स इट आई गेस. उसके अलावा ज्यादा रीजनिंग का क्वेश्चंस भी नहीं आया. एंड इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो क्वेश्चन था दैट आई फेस्ड डिफिकल्टीज दैट. एंड yeah, that's it I guess, but सब कुछ तो कवर हो ही गया. That is pretty much it. But like आपका antonym synonym सही गया? हाँ, उसमें passages में भी Passages that was good. हाँ, but last के जो passages थे कर सकते थे, but half हो गए थे first of all, and secondly time starting a process करने में time चला गया, and that was so upsetting.
So I think you've done well from what you were telling me about the exam. Like you did your best, and most of the portion went well for you, right? Yes, but very disappointing, no? Like जिस हिसाब Yeah, से the prepare last part किया is उस a हिसाब little से बिल्कुल भी disappointing, मतलब definitely. But then again, thinking about the rest of the question paper, then you've done pretty well. So I think Yeah. you shouldn't definitely dilute your confidence right now when it will be very beneficial in the next round, right? I hope so. So don't worry, it'll be well. All the best, Chandni. Thank you, ma'am. Yeah, ma'am. I guess Aditya wants to say something. Aditya. Ma'am, actually, I want to share my experience to Ignite India and to the NIFT also. When I came to Bangalore and to Ignite India, मेरे को कुछ भी नहीं पता था what's up going on, क्योंकि मैंने पहले भी एग्जाम दिया था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था and I was like कि अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ. So I came to Bangalore and I start taking offline classes. So I first met to Shruti ma'am. Shruti ma'am ने मेरे को the basic thing of drawing सब कुछ बता दिया and I know it very well now. And जो things मुझे नहीं आती थी I can do it better in that. कृष्णा सर ने हेल्प किया, नवीन सर भी यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस के लिए आते थे, सारे सबने मतलब मिल के मेरे को नॉट अकेले मेरे को और भी बच्चों को बट मुझे हेल्प की और इट वाज अमेजिंग. आई सीरियसली मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो मुझे पहले जब मैं एग्जाम दिया था तब का पेपर और अब का पेपर अगर मैं कंपेयर करूं तो पहले का तो मेरे को एलकेजी यूकेजी का बच्चा टाइप का है, वो एकदम मैंने बकवास किया था एंड मेरा रैंक भी बहुत वियर्ड था. इस टाइम आई होप मेरा रैंक बहुत अच्छा आएगा और आई विल गेट कॉलेज टू, क्योंकि इस वक्त मेरे को बहुत सारी चीजें आती है जो मुझे पहले नहीं आती थी और it's all about to सब कुछ Ignite India के लिए हुआ. Thank you so much for everything. Thank you, Aditya. It's because of your efforts, maybe. Anyone else who wants to say something about like or give some review for Ignite India? Guys, meanwhile, I want you guys to subscribe our channel because who all are asking for MFM and MDS views, reviews. So we will provide it in like short period of time. So please stay tuned and हमारा channel subscribe कर लीजिए, bell icon भी दबा लीजिए as I told you to get notified. And also please like the video and share it as much as you can because हम लोग जल्दी जल्दी ऐसे videos लाते रहेंगे. And if you guys want to say something, you can like anytime हम लोग आपके लिए यहाँ हैं आपकी query के लिए. तो yeah, please. Dikshita, Naina, you want to say something like any reviews you want to give? Guys, please on your camera, yeah, please. Yeah, while talking, I request you guys again to switch on your videos. Dikshita? Ma'am, reviews about Ignite India or the exam? Yeah, like first you can start with anyone. No, like, I actually said about the exam. I would want to say about Ignite India. Actually, I was looking out for many institutions, but later one senior from same Ignite India, she suggested me about Ignite India, and then I contacted Krishnanand sir. And the next day itself, my classes started. Then within 2 months, they taught me everything, and today I'm not so worried. I don't know why. Matlab about CAT, though I'm literally not so worried. The GAT, the submission part, I told you, no, ma'am, that I'm scared. Everything, like, I really like the institution and stuff. And Vijendra sir, Krishnanand sir, ma'am, everyone, thanks to everyone that we could give our exams well. Yeah, thank you, Dikshita. Thank you so much. I just hope you guys did well and सबका result भी अच्छा ही आए. Obviously अच्छा ही आएगा. Just tension नहीं लेनी है. Confident रहो. Nasim, you want to say something? I just saw your video on. Or Naina, anyone, guys?
गाइस आई वांट टू रिमाइंड यू, हमने अभी अभी YouTube लाइव में चैट्स में फॉर्म के लिए लिंक डाला है. So this form is about like what we are planning to do for the situation test and PD also. So please fill it, don't miss it out. Or if you guys have any query related to this exam or like any thing like about PD or situation test or NIFT also, you guys can contact. मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही share किया है कृष्णा सर का नंबर, तो आप contact कर सकते हैं, and you guys can contact through our Instagram profile also. For you guys only. Aditya, you want to say something? एक्चुअली स्टिल मैं ही बोल रहा हूँ और लोग बोल ही रहे हैं और ना कैमरा ऑन कर रहे हैं. प्लीज से देम टू ऑन योर कैमरा एंड से समथिंग Okay, अबाउट guys, I इंग्लिश. would like to say that I Yeah, think you ma'am. guys have done your best in this exam. Okay, so right now, please do not worry, and please just if you're stressing still about it, I would say what सब has कुछ happened has happened. So start worrying about what will happen in future. हम And सब I know मैं you सब guys, and you're actually so great with like the cat portion, right? So Yes, why ma'am. worry about the cat portion when the cat portion is going to take you out with flying colors? या गाइस, एंड हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि इस ईयर का क्या कट ऑफ रहेगा. थोड़े एनालाइज के बाद हमें भी थोड़ा टाइम चाहिए. सो या विल टॉक अबाउट इट लेटर, लाइक वेरी सून. जस्ट स्टे ट्यून्ड. सब कुछ अच्छा गया, सब कुछ अच्छा गया. बस अब पार्टी करो सब लोग और चिल मारो. जस्ट बी चिल गाइस. या गाइस, बिकॉज अभी स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं है, तो जस्ट बी हैप्पी. अभी हो गया एग्जाम, अच्छे से होगा सबका. आई जस्ट होप कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं और वैसे भी जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, सबका रिजल्ट अच्छा ही रहे. बिकॉज अल्टीमेटली सब लोगों ने अपना बेस्ट दिया है, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है. तो वो कहते हैं ना, मेहनत का फल, सबर का फल मीठा होता है ना. तो बहुत सबर किया आप लोगों ने, तो अभी फल भी मीठा ही होगा. तो या जस्ट stay positive and wait for your results, and meantime prepare for your situation test also, because जितना practice करोगे उतना तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, है ना. Yeah. Shruti ma'am, we have a question in the chat box, like how can MDiS student prepare for GD or interview round abhi se? So can you talk about it, like? Shruti ma'am, I even had I wanted to ask a thing, because I have my board examinations now in the March, so I will have my pre-boards and everything. So can we, can it be postponed, like the portfolio classes and all? And if not, then how shall we cover up it? Hello, Sanskruti. Yeah, what is your questions? Please repeat. Sir, my board examinations are there in the March. They would start from 4th March, and now we have our pre-boards and practical examinations and all. I am from science stream, so we have this portfolio and GDP classes and all.
So what would be the solution for us? Because now I'll have to concentrate more on my works. Understand that you have board classes and school and colleges classes are there for the not only you but many of the students have the similar problem. So what we can do, we will not keep long sessions like 3 hours, 4 hours, or we will just keep it for half an hour or 1 hour, and you will have just a small work after the class. You need to do that. So after completing that things, see, why we are starting normally. The thing is that till your examinations you will able to prepare each and everything, so you will have a complete knowledge of everything. So little things if you will grasp, you will have a huge knowledge regarding to that subject, right? So you need to just take out 1 hour or 1.5 hours. That's enough for you. Yes, sir, but I'll have to go to my college for the practicals also and the pre-boards So too. most of the classes will be at evening only, around 6 to 7. At that time, you might be available. Okay, sir. Okay, sir. Okay. And Sanskriti, how was your exam? How was your paper? Sir, my paper CAT 1 was really good. GAT was good too, but my data got exhausted and could not solve the last 25 questions, and I was really heartbroken. But the only thing that soothes me is that I was not much into fashion, so since it was No. Okay, so Sanskriti, you need not to worry. So I think most of the students have faced the similar problems here. So even I request all the students, those whomsoever have faced the similar problems or any problem. So all you can just write a mail to the NIFT itself regarding your problems that you have faced this much problem, this problems. So sir, what should we do? What is the next steps? So if you all will write the same mail, no? So what will happen? They will consider your things, or they might plan for the next round of examinations. So even I request all the students to just write a mail, whatever problem you guys have faced. okay, sir. Okay. Thank you, sister. And how was your GAT paper? Hello. My GAT paper, sir. I told you about the GAT paper. Yeah, your GAT paper only. And my CAT paper was good, really good. I'll send you the PDF on your WhatsApp number. It went good. How much time did you take? Sir, I took, I utilized all the time that was given to us, 3 hours, because I thought that instead of submitting it earlier, I won't be benefited in any way. So I would take all, then do the detailings or something like that. So I consumed all the time and I could submit it nicely. Yeah, that's great. I mean, most of the students have done only in 2 hours. They have submitted also, and it's good that you took time and you have enhanced the answers. You have just made the details. Yes, sir. Yes, I thought why not utilize the 1 hour given. So I hope everyone has just utilized their full times. So if you even not satisfied with the things, I urge to all the students just write a mail. Okay. So Dipti, do you want to ask any question? No, sir. Few questions are like on YouTube. They are asking like for the MFM and about MS, MDes. Yeah. And they're like little bit worried because all of them are saying I totally screwed up, and what will happen next. Some of them are asking for customer care of NIFT. So if you guys like anyone knows the customer care number, can you guys please put it in the chat box? See, for the helpline number, what you need to do, so go to on a NIFT website where you will go to on admission sections. There itself you will find the hotline number. So you can just get from there and you can call. And if you are also facing problem, just write a mail. So mail is a convenient way to communicate. Yes sir. So I hope guys सबको अपना आंसर मिल गया होगा जो पूछ रहे थे अभी कस्टमर केयर के लिए.
एंड अभी सर थोड़ा लाइक बहुत सारे बच्चे मैं देख रही हूँ सब लोग डिप्रेस होके मैसेज कर रहे हैं, अच्छा नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया, तो थोड़ा आप उनको मोटिवेट करो। कोई नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सारे प्रॉब्लम है, निफ्ट ऐसा नहीं है कि जस्ट इसके बेसिस पे या फिर अपना वो आंसर दे देंगे, रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। बिकॉज मुझे जो लगता है 50% बच्चों या 40% बच्चे एटलीस्ट जो है कि सिमिलर प्रॉब्लम फेस किए। आज मेरे पास एक कॉल आया था इन द नून इटसेल्फ, उसका बार बार डाटा ऑफ हो जा रहा था, वो पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाई। In that way, what should she do? She can just write a mail, other than she doesn't have any options to do. But I hope कि निफ्ट इस पे कोई एक्शन लेंगे और वो कुछ अलग प्लान करेंगे। तो जो भी जिनके साथ भी ऐसा हुआ है वो चिंता ना करें, डेफिनेटली निफ्ट will give you the solutions for that. या सो आदि तुम थोड़ा बोलो बच्चों को कि ज्यादा स्ट्रेस आउट ना करें। तुम कैसा फील कर रहे हो अभी? पार्टी करने जा रहे हो? क्या करने वाले हो अभी? Ma'am, can you say it again? I didn't hear what you say, ma'am. Yeah, I'm asking you to motivate our students. They are so depressed. So उनको कुछ बोलो कि mood off ना करें अभी. It's just the starting. अभी situation अच्छा है. Guys, exams are over now. Just think about NIFT, your dream. And here we are seniors, Dipti, ma'am, Binshita, ma'am, Mukesh sir. Ask about how they realize college and कैसा उनके साथ रहता है. ये लोग बताएंगे अच्छे से कि मैं तो अभी कॉलेज में गया नहीं हूँ, आई एम इन बैंगलोर। मैं देखता हूँ बहुत सारे सीनियर्स को, उनसे मैं बात करता रहता हूँ। तुम लोग भी बात करो, देखो, जानो, इनका नंबर लो, चेक करो, उनसे सीखो। मेरे पास तो है। कैरी ऑन। या गाइस, सो इसकी तरह थोड़ा हैप्पी होना सीखो तुम लोग। आदित्य देखो कैसे कितना खुश है अभी, थोड़ा एकदम भी स्ट्रेस नहीं है उसको, तो इतना कॉन्फिडेंट रहो। एंड या अबाउट कैंपस आदि हम लोगों ने खुद ऑनलाइन किया है सब, तो अभी कैंपस के लिए ज्यादा डिस्क्राइब करने के लिए है नहीं। बट या I'm not telling about मैम कैंपस, you can tell about the studies जो पढ़ाया जाता है ऑनलाइन मोड में, वो भी आप बता सकती हैं। या तो क्या जानना तुमको बताओ, because you are from design department, I'm from BFT, so what you want Okay, me to मैम, बिंशिता मैम को बुला दीजिए, वो हेल्प। I can call. Dipti, many of the students have also wants to know about the BFT. So can you just explain the students about the BFT? What do they teach in the BFTs? Why do they take the BFT things? Yes, sir. So like actually from the name also we can get the term fashion technology. So in this department ना हम लोग दोनों चीजें सीखते हैं. We'll learn how we handle the computer, like if we have a app like Myntra, तो वो पीछे से कैसे work करता है. All the coding part also we'll learn, and also the designing part, like patterns कैसे बनाते हैं हम किसी भी designs के, और construct कैसे करते हैं garments. तो हम लोगों की studies like दोनों चीजों को मिला के होती है. I can say कि अगर कोई बच्चा BFT करे तो he can do like designing work also. It's not like कि हाँ डिजाइन वाले डिजाइनिंग कर सकते हैं. It's just depend on your choice. Yeah, like in our curriculum ना we have everything. We have industry visit कि how the machines are working, और पीछे से कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन में कौन सी मशीन कौन से कपड़े के लिए हम लोग यूज करते हैं. फिर we have like fabric science, like कौन से टाइप का फैब्रिक कहाँ से बनता है, कैसे बनता है. तो फ्रॉम स्क्रैच वी आर लर्निंग दीज काइंड ऑफ. उसके बाद so like as we have all the basic terms na, fabric science, most of like in the first 3 semester we learned about fabric science only, है ना, जिसमें हम लोगों को सिखाया जाता है कि फैब्रिक का बेस कहाँ से होता है, लाइक कहाँ से बनता है. खादी जैसे हमें पता है कॉटन से बनता है, कॉटन कैसे आती है, तो ऐसे हर एक चीज के बारे में हम लोग को सिखाया जाता है. उसके बाद धीरे धीरे हम लोग को पैटर्न्स बनाने सिखाए जाते हैं. पैटर्न्स लाइक अगर आप एक शर्ट बना रहे हो तो उसके लिए क्या पैटर्न, मतलब कैसे पैटर्न आपको बनाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हो. देन हम लोग काम करते हैं क्लोथ पे, जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं. उन पैटर्न्स को लेके हम लोग गारमेंट स्टिच करते हैं.
उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं मशीन्स के बारे में, लाइक कौन सी मशीन्स हम किस इंडस्ट्री में यूज करते हैं और किस चीज के कपड़े के ऊपर कौन सी मशीन यूज करते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट लाइक यू कैन से लाइक रिटेलिंग पार्ट, मर्चेंडाइजिंग, मार्केटिंग जो भी है. डिजाइन वाले आर द इनिशियल स्टेज. सो डिजाइन वाले आप लोगों को डिजाइन बना के देंगे एंड देन जो भी प्रोसीजर आगे रहता है, सो ऑल द प्रोसीजर आर डन बाय DFT स्टूडेंट्स. So I guess it's a quite difficult job to handle, but at the same time it's interesting also because you get to learn about everything related to like fabric till the ending of the garment, like how it come out. So yeah, that's it. One more thing I want to know from you. So how do you see this year ka question and when you wrote the questions? What is the difference? Yeah, sir, actually the major difference is the online term, to be very honest, because जितना मैंने अभी रिव्यू सुना है बच्चों का, सुबह से हम लोग बात कर रहे हैं, तो सब लोगों का लाइक मेजर इशू यही रहा है कि सबमिशन एंड ऑल. तो आई गेस उन लोगों के लिए बहुत लाइक डिप्रेसिंग हो जाता है एक टाइम पे, अगर आप कुछ ऐसे कॉन्टिन्यूसली एक चीज सुन रहे हो कि सबमिशन नहीं हो रहा, सबमिशन नहीं हो रहा, तो ड्यूरिंग द एग्जाम आप फोकस भी नहीं कर पाते हो अपने एग्जाम पे. सो आई गेस उन लोगों को थोड़ा इस चीज पे काम करना चाहिए था. But yeah, अभी जो हो गया है, we can't do anything about it. But yeah, I guess this year it was a bit difficult to handle as it was online. But अगर हम एक क्वेश्चन पेपर के टर्म्स में बात करें तो I guess it's quite easy. इतना डिफिकल्ट मैंने अभी तक किसी से सुना नहीं है कि हाँ it's very hard to do and all. Related to like what I wrote like during my exam, so it was very easy. Like ऑफलाइन होता है तो थोड़ा लाइक है ना, एक हो जाता है कि सबमिशन एंड ऑल, इसका वो तो नहीं था सिनेरियो एकदम भी. तो थोड़ा माइंड रिलैक्स करके आप 2 घंटे अपने एग्जाम पे फोकस करके एग्जाम लिख रहे थे. बट मेरे टाइम में कट ऑफ थोड़ा लाइक लो गया था बिकॉज एग्जाम थोड़ा मॉडरेट था. इट आई विल नॉट से इट वाज डिफिकल्ट, बट या ऑल्दो फॉर सम पीपल द मैथ्स पोर्शन विल बी डिफिकल्ट. पर मेरे को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए थोड़ा मैथ्स इजी था. एंड जीके के क्वेश्चंस थे, बट इट्स नॉट फ्रॉम फैशन डिपार्टमेंट, है ना. हम लोग सुनते हैं कि निफ्ट में जो भी जीके के क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड टू फैशन ही आते हैं, बट मेरे टाइम में भी ऐसा नहीं था. एंड आई डोंट थिंक कि इस बार भी कुछ था जीके क्वेश्चन से रिलेटेड. And about English and all, everything is quite like moderate only. कुछ ऐसा difficult नहीं था. तो difficulty level हम लोग बोल सकते कि same ही था, but yeah, just वो online offline का थोड़ा हो गया situation. Let's hope for the best कि अभी situation test कैसे handle करते हैं लोग. Thank you, Deepti. Thank you so much for your valuable input. Okay. So, student, do you have any questions, or a student have asked any question in the YouTube comment box? So, Deepti, can you read it on? Just tell me. Sorry. Yeah, sir. Same question we are getting, sir. The question paper was messed up and all. One student, Adarsh, is saying, why were they asked about who won in 2019? So it's a GK question, guys. You can't say current affairs ही आएंगे. GK तो GK होता है, वो पुराना भी आ सकता है, I guess. They are asking about 1983, 2019. It's okay, guys. You have to cope up with that. अगर current affairs होता तो we can like थोड़ा सोच सकते थे कि हाँ सिर्फ 2020 या 21 से आएगा, बट इट्स लाइक जीके तो थोड़ा चलता है. See, the thing is, अभी स्टूडेंट का मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, तो he has written that cat was good, but I don't know about the cat. Yeah, so cat सबके लिए ही easy था. cat इस बेस पे जज किया जाएगा किसने थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया उसको, थोड़ा किसने उसमें एलिमेंट्स ऐड करे, उसी चीज में उसको कैसे और बेटर बनाने की कोशिश किया है. वो सब चीजें इजी है, तो वो स्कोरिंग भी सबके लिए टफ हो जाएगा. जो क्योंकि सारे बच्चों ने ही वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा होगा, सबने ही बना लिया होगा. जिसका सबसे ज्यादा डिफरेंट होगा उसी का उन्हीं को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. तो इस बेसिस पे वो करेंगे अभी. बट मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सिर्फ ये पहला स्टेप नहीं था. पिछले 2 सालों से जो निफ्ट जो है वो सिचुएशन टेस्ट कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं.
But this year, there is a chance, there is a 90% chance they are gonna conduct the situation test. So a student, if you are not confident enough, even your exam went well, so start preparing for the situation test from tomorrow itself. Today you wrote the exam, so you need to take a rest for a day. Just go out and just have some food outside and just talk with your friends, talk with your families. It will feel you easy. Now, from tomorrow itself, start planning for the situation test. If you want any kind of help, just reach out to us. Just fill the form. The form is in the chat box itself. So even right now, I am just pasting a form link. So please fill this form and attend the tomorrow live classes for the situation test, for the portfolio, for the interview round. So master student will have the interview round, they will have the group discussion, and they will have portfolio also. If they are going to write some plan B examination, like some, if they are planning to write some private college like CST, Pearl, UID, MIT, they might ask, or they're definitely gonna ask for the portfolio. So if you need any portfolio classes or any one-to-one sessions, counseling sessions, if you need, just fill that form and just let us know. Our team will directly connect with you. Yeah, so one girl, Akansha Pradhan, she's saying in the chat box, anyone got notifications in the chat box during the examination? Was the chat box active? Because I asked for help regarding some issue, but I got a reply from none. I was in dilemma even after setting up. Guys, I guess बहुत लोगों के साथ ये इशू हुआ है, स्पेशली चैट बॉक्स वाला. तो इट्स नॉट लाइक वो किसी किसी को रिप्लाई कर रहे थे, किसी को नहीं कर रहे थे. बट अगर आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया है तो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज वो सारे आंसर्स ऑब्वियसली वो कैच कर लेगा. एंड उसके बारे में मत सोचो, अभी अभी आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो. बहुत लोगों का ये इशू हुआ था. इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन. एंड ऑल्सो वन पर्सन, आरुषि, she is saying, can you please tell me that I was not able to complete my GAT? It got ended automatically, so my paper got submitted right automatically. Yeah, Arushi, obviously your paper got submitted automatically, as हम starting से like meeting में बोल रहे हैं कि जिनका भी ये issue था automatically submission वाला वो हो गया है submit अपने आप, और answers भी सब save हो गए हैं. तो अभी इस बारे में tension मत लो. और those people who are asking for कट ऑफ, हम लोग बहुत जल्दी इस बारे में डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगा इस ईयर का फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स. बट अभी थोड़ा टाइम चाहिए, हमें भी थोड़ा एनालाइज करने के लिए. आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट. जस्ट अभी ध्यान रखो कि सर ने लिंक शेयर किया है यूट्यूब चैट्स में, सो वो फॉर्म फिल अप करो जल्दी से जल्दी, बिकॉज कल से हम लोग स्टार्ट करें लाइव क्लासेस फॉर सिचुएशन टेस्ट एंड ऑल. सो अटेंड कीजिए एंड अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, बिकॉज वही आप कर सकते हैं, राइट? जो हो चुका है उसके बारे में सोच के अभी क्या करना है, जो आने वाला है उसके बारे में सोच के काम करते हैं ना. और ऑल्सो हम लोगों का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम लोग हर रोज ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं. अगेन आई एम टेलिंग, उसके बाद जल्दी हम लोग लाइक 2 नए चीजें और लाइक वो कर रहे हैं, सिचुएशन टेस्ट का और पीडी का. जल्दी से हम लोग स्टार्ट करेंगे. एज हमने अभी एक शेयर भी किया है लिंक स्पेशली सिचुएशन टेस्ट के लिए. तो कल आई वांट यू गाइस टू अटेंड द क्लासेस, एंड जितना ज्यादा एंगेज हो सकते हैं कीजिए, शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल. एंड या किसी और को कोई भी डाउट्स है, गाइस कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स, विल रिप्लाई. Okay, sir. Many people are asking when is the situation test? Okay. So right now, Aditya will also give his perspective regarding the situation test and portfolio classes. So last year also we wrote the examinations. So now he would like to join. Aditya, over to you, Aditya. Go ahead. Thank you, sir. Actually, with the
क्वेश्चन कैसा है उसमें तो एक्चुअली आई मोस्टली नो अबाउट क्लेवर्स मुझे अच्छे से आते हैं. आई फील डिफिकल्टी इन ऑरिगेमी मेरे से नहीं होती है. सो व्हाट शुड डू ऑरिगेमी के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैम बता सकते हो आप? मैम आप बता सकते हो कि मेरे को ऑरिगेमी के लिए क्या करना चाहिए? ऑरिगेमी ओके. आदि तुम पहले हम लोगों से थोड़ा लाइक डिस्कस करो कि एज यू टोल्ड अस लाइक तुमने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया था, राइट? सो लास्ट ईयर आपने कैसे प्रिपेयर किया था, देन वी विल टॉक अबाउट कि हम इस बार कैसे कर सकते हैं, है ना? थोड़ा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस आप बताओ, देन विल डिस्कस. ओके मैम. सो एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने कोई कोचिंग नहीं थी, मैंने खुद से किया था. आई जॉइन इग्नाइट इंडिया इन काउंसलिंग टाइम, आई थिंक मे बी काउंसलिंग टाइम पे. सो मैंने जो अपनी तरफ से किया, जो इग्नाइट इंडिया के वीडियोस आते थे उसको मैंने देखा. तो दे टेल मी द टेक्निक ऑफ हाउ टू fold a paper in a to make it look good. They मतलब buy a paper cutter. Usually we use paper cutter to cut the papers, but they tell us the trick to how to fold the paper by using paper cutter to save paper also and don't use other paper in that. So that trick was अभी भी मुझे याद है और मैं उसको कर भी सकता हूँ. और अभी के लिए तो मेरा कहना यही रहेगा कि ओवर टू यू मैम. या अभी एक डाउट आ रहा है YouTube चार्ट्स में कि if I got 75 to 80 marks in GAT, which campus can I expect? So प्रेरणा, we can't like say as of now कि कौन सा कैंपस तुम्हें मिल सकता है, बिकॉज मैंने अभी बताया कि हम लोगों के साथ जल्दी कृष्णा सर ज्वाइन करेंगे एंड ही विल लेट यू नो लाइक थोड़ा लाइक क्या क्या कट ऑफ रह सकता है, एंड देन मे बी आप समझ सकते हो कि कहाँ तक कैंपस जा सकते हैं और. बट कट ऑफ जब तक नहीं आएगी तो वी कांट एक्सपेक्ट लाइक these questions की कहाँ कैंपस मिलेगा and all. Then we have a question. So my second device was not able to connect in GAT exam from there only, and my invigilator didn't said anything. What to do? Sir, I'm worried. I guess Aditya के साथ same situation हुआ था. Aditya, can you please respond to this answer? Hi Aditya. Hello. या सो यूट्यूब पे हमें क्वेश्चन आ रहा है कि सेकेंड डिवाइस से अगर कनेक्ट नहीं हुआ था गैट एग्जाम में और अगर कोई टीचर ने भी रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो बहुत वरीड है, उसको क्या करना चाहिए? कौन वरीड है? Yeah, there is a student Isha Shetty on YouTube. Okay ma'am. Sir, my second device was, let me read the question ma'am please. Yeah, so she's saying she's not able to connect her second device, and neither her faculty said like this was not okay and all. So what to do? She's worried. But she attended the exam, she's saying. Like उसका आई गेस तुम लोगों को 2 डिवाइस से कुछ ऐसे कनेक्ट करना था तो उसने नहीं कर पाई थी वो दूसरे डिवाइस से कनेक्ट, और किसी फैकल्टी ने भी उसको नहीं बोला कि ये सही है या गलत है, तो अभी क्या करना चाहिए उसको? आदित्य, यू आर ऑन म्यूट. आई थिंक अपलोड कर दिया उसने तो उसको मैसेज आया होगा कि नहीं. अगर मैसेज आया है तो इट्स गुड, उसका अपलोड हो चुका है. अब उसे कोई वरीड करने की चिंता नहीं है, उसे बस वेट करना है कि अब रिजल्ट क्या होता है. अब तो कुछ कर भी नहीं सकते अगर उसका अपलोड नहीं हुआ है या कुछ भी दिक्कत है. अगर तुम्हारा सेकंड डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा था तो तुम्हें तभी कॉल करना चाहिए था, बताना चाहिए था. या उस पर मैसेज भी आता है, सेकंड डिवाइस अगर कनेक्ट नहीं होता है तो मैसेज आता है हमारे मोबाइल पे और डेस्क डिवाइस 1 पे भी मैसेज आता है ऊपर पे कि हमें क्या क्या करना नहीं चाहिए, क्या क्या करना चाहिए. तो बस मेरे को तो नहीं लगता कि इट्स एनीथिंग समथिंग टू वरीड अबाउट. Yeah, okay. I hope Isha you got your answer. And again we have similar question.
सुधीर इज आस्किंग उसने सबमिट नहीं किया था तो ऑटोमेटिक सबमिट हो गया. गाइस मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जिसने भी सबमिट का बटन नहीं प्रेस किया था बट ऑटोमेटिकली अगर वो स्क्रीन लाइक फिनिश एग्जाम वाली आ गई थी तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया है. तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट, जस्ट चिल. And yeah, some students are asking about how many seats in journal MDisk. I guess these kind of information you get from NIFT website also. And जो भी कैटेगरी वाइज रैंक के लिए पूछ रहे हैं या ऑब्वियसली कैटेगरी रैंक भी आएगी, बट अभी इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं. लाइक कृष्णा सर विल टेक ओवर इन सम फ्यू मिनट्स, ही इज देयर विद अस, तो वो तुम्हें बताएंगे कि कट ऑफ का क्या सिनेरियो है इस बार. And one of student is saying CAT paper didn't upload before 1:15. It got uploaded at 1:27 after invigilator told me to upload from the laptop itself. So to say something, ma'am. There is one guy asking, is there wait. Do any of the students were facing warning issue during examination? तो मेरे को कोई भी वार्निंग इशू नहीं आए थे एग्जामिनेशन के टाइम पे. जस्ट एक वार्निंग आ रही थी, माय पीडीएफ इज नॉट अपलोडेड, 8 मिनट्स आर लेफ्ट, 2 मिनट्स आर लेफ्ट, जबकि मेरा पीडीएफ अपलोड हो चुका था 1 घंटे और आधे घंटे पहले, बट स्टिल वार्निंग्स आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे. तो मैंने उसको इग्नोर किया बिकॉज क्योंकि मेरे को अपने ऊपर विश्वास था, मैंने अपलोड किया, तो आई वाज थिंकिंग कि प्रॉब्लम होगी. बट आई टॉक टू माय फ्रेंड, उसके मोबाइल में भी सेम मैसेज आ रहे थे बट उसने भी अपलोड कर दिया था. तो मे बी दैट मैसेज इज फॉर एवरीवन, वो सबके मोबाइल में जा रहे हो. कि जैसे एग्जाम में होता है कि टीचर्स बताते हैं कि 5 मिनट्स आर लेफ्ट, 8 मिनट्स आर लेफ्ट पेपर देने के लिए, तो क्या पता वो मैसेज सबको जा रहा हो वार्न के लिए कि यू हैव जस्ट 2 मिनट्स 3 मिनट्स टू सबमिट योर पेपर. आदि ऑल्सो अभी मैंने क्वेश्चन जो रिपीट किया था, लाइक वो बोल रही थी लड़की कि कैट पेपर उसका 1:15 पे अपलोड नहीं हुआ, 1:27 पे हुआ, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को भी मैंने टॉक किया, उनका 120 और 128 पे जाके सबमिट हुआ है. तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई दिक्कत है. निफ्ट का लगता है क्योंकि पोर्टल खुला है मॉर्निंग से 2 to 5 आई थिंक, तो उसके बीच में भी उन लोगों ने लगता अलाउ कर दिया है टू अपलोड. तो अपलोड हो गया ना, दैट्स द मेन थिंग. अपलोड नहीं हुआ होता तो थोड़ी प्रॉब्लम होती, बट हो गया तो दैट्स अ गुड थिंग. ओके, शिव बारन इज आस्किंग मैम प्लीज मुझे बताइए कि मैंने कैट के एग्जाम में मेरे फोन की बैटरी ऑटोमेटिकली लो हो जा रही थी, तो मैंने एक ही ड्राइंग सबमिट करी एंड 2 क्वेश्चन नहीं कर पाई. सो व्हाट वी कैन डू? आदित्य, कैन यू प्लीज से समथिंग? आपने अगर एक ही किया है तो दे विल गिव मार्क्स अकॉर्डिंगली 1 ओनली. दे डोंट गिव मार्क्स अकॉर्डिंग तुमने लेफ्ट किया है, तो देयर इज नो चांस of something. Question was of 100 marks, so you will get some marks. I don't know how was the number was not showing there कि कितने marks का कौन था. तो I don't think हम अभी कुछ कर सकते हैं, राइट है ना आदि? हाँ, it's we can't do anything. It's totally depend upon you. बट गाइड प्लीज टेक केयर, लाइक नेक्स्ट टाइम से आप कोई भी एग्जाम ऐसे दे रहे हैं ऑनलाइन तो प्लीज ध्यान रखें कि आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं सो बैटरी वगैरह सब चार्ज है और कोई ऐसे नेटवर्क इशू नहीं आ रहा है, ताकि आपको कोई आगे से ऐसी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, है ना? इट्स जस्ट अ थिंग कि आपको सीखने को मिल गया उससे, बट अभी जो हो गया हम लोग नहीं कर सकते कुछ. शिवबरन डोंट स्ट्रेस अभी, इट्स ओके. मे बी आपका जो मार्क्स मिलेगा उस हिसाब से अभी गैट एंड गैट टोटल होके आएगा ना, सो डोंट वरी अबाउट इट. Okay, so again, Sudhir is asking how many seats are available for MDisk overall. I guess this kind of information is provided on the NIFT official website, so you guys can check it out from there. Adi, one question is for you again. Shrishti is saying in the first question where it was mentioned use only black and white, so I did line drawing with black pen. Is it correct? Ma'am, what was the question? Black and is the first question. Yeah, I guess you did this question
you attempted the question ना black and white वाला, so she is saying कि उसने उसमें सिर्फ black क्या pen use किया है, so is it fine? So it's matter, it's good now. If you अगर तुमने उसे अच्छा बनाया black pen use करके भी, तो it's good, क्योंकि we have to use white and black. हमारी sheet already white है, we have to just draw. अगर वो भी करते हो तो वो black से ही आएगा, तो just black and white means no colors. It's like old movie type. Yeah, actually you guys already saw like what Aditya did. Aditya, can you show it again, like black and white वाला जो तुमने किया? Yes ma'am, what do you want? I'm saying कि can you repeat it again, like जो तुमने किया था black and white वाला? Okay ma'am, I will show it. I done it this. Yeah, so you guys can see it again, like उसने भी ऐसे पेन से ही like black color से ही sketch किया हुआ है. It's not like कि कुछ ज़्यादा. I did poster colors because it was mentioned to do poster colors, so I did poster colors and black pen. That's it. So, ma'am, please give me a second. You also have something in your hand. I also have something in your. So. या गाइस अभी जो भी लोग पूछ रहे हैं किस चीज के लिए, जो एमडेस का स्पेशलाइजेशन एंड ऑल है, अभी कृष्णा सर हम लोगों को लाइक ज्वाइन करेंगे जस्ट 2 minutes मोर, तो ही विल लाइक एक्सप्लेन अबाउट एवरीथिंग अबाउट एमडेस एंड ऑल, especially what will be the, yeah, Krishna sir is there. Hi sir. Yeah, Welcome. hi. I was always there, was just listening you guys in between my work, like, to finish. Well, so when we talk about the queries, what I have seen, most of the queries here on YouTube and students have asked there, and I see I'm happy for all the new subscriber, all the new family member who have joined us, because as our team has informed you, the lot of things is coming for you. What next and how best we can do it, that has to be our plan. And that's what, as per a plan, we are doing it. And you all are most welcome in this session. So first of all, I would like to see there are 60% of you have read like the videos. Just जल्दी से आप सबको फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत ज्यादा ही कंटेंट आने वाला है. अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे हो यहाँ पे निफ्टियन, करंट पास आउट, एलुमनाइज, all these are in a team, a specialized team for MFM, BFT, M design. So आपका अभी से लेके जो जर्नी है towards your counseling, towards your next preparation, towards your all this planning, that will be taken care by us. तो कैसे करती है टीम इस सब का प्लानिंग, कैसे हम आपको क्लासेस देते हैं, how we teach, how we take care of your this plan, obviously we'll discuss. बस सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है about the cut up, that I would like to clear it. जो आखिर कट अप में क्या होने वाला है, किस किस एग्जाम में कौन कौन सा होगा. So starting with MFT कटअप, अगर हम यूजुअल MFT कटअप देखें, so that goes to 40% for general. This year it will come down to 32-35, क्योंकि जैसा पैटर्न आया, I had a word with around 15-18 students until now. That's what I was doing it, all the back study, research and all. And what I promise, I will explain you right now one by one, all the cut-up marking possibilities for all the exams. And what all we are offering you from tomorrow, how all these things are going to work for you. There is a link has been mentioned here. आप अपना भी काम भेज के मार्किंग ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से. You can ask me also. My number has been also given, which is 9972046911. Here you can WhatsApp us. You can make sure that press the bell icon button so that you can get this kind of videos, content. So सबसे बड़ी जो आपकी क्वेरी है या टेंशन है अभी दिमाग में, जो अच्छा कैट में क्या नंबर आएगा मेरा, या what will happen to my all this, because we know GAT ka probably they will upload and you will get to know your score, marks and all, but CAT ka kya hoga especially, this is very very important question is. So we will figure out all this planning are, we will look into is the best possible solutions are, और आपको सारा भी इनपुट हम देने वाले हैं. तो I just discuss about the MFT. You haven't joined, you have joined now, so आप जाके MFT का मार्किंग वो डिटेल अभी चेक करिए, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन करा है. And I hope you all are interested to know about the other courses also. So write in the comment box, YouTube comment box, आप लिखना शुरू करिए जो which exam, which next exam you want to know, किसका कटअप जानना आपको क्या करना है. And I can see many of you have just now we got a 4 new subscriber on the channel. Into the कुछ क्वेश्चन देखते YouTube का, chances of getting into MDAS अभी बात करेंगे हम लोग. MDAS program, skip MDAS, okay. तो मैंने MFT का बात करा, now I'll come to the MDAS only. The next program which I will discuss right now, that will be obviously the MDAS is only.
So let's have a discussion on MDES itself. Looking at the MDES pattern, we know MDES is quite similar to BDES. आपका CAT का paper था, आपका GAT का paper था, or they have followed the previous year pattern. It's just UI experiences, user experience of the student was not good while writing the online, which we got the all the comment. And looking at this year pattern, you'll be surprised to know, but it will come between 30 to 35%. This is the idea. I mean, I'm talking more. If let me come down to more a small gap. So that will be 31 to 34. This can be a cutoff for general. Why I'm taking a cap right now? Because I have a less number of the student CAT copy. More number of the student, once we'll submit, we'll able to give you better picture. Might be tomorrow evening cutoff videos which will launch, will come in a live. That will give you the more better idea. By the time we'll have at least 1,000 student paper and their analysis view by the team, so we can tell much more better, so you all can submit on our Ignite_India on YouTube. I mean Instagram also. You can submit on channel as well. Here you can take the number 9972046911. I got just now one message. One of the student, I think they have sent me the PDF. So detail, obviously we'll take it forward. We'll discuss on it. Now coming back to the MDES program, cutoff 32 से 35 ले लेते हैं, ideally. Why the cutoff will be in this percentage? And I'm talking in a percentage. So when you take percentage, so that means out of total marks, what will be your percentage is. इतना come down क्यों होगा? क्योंकि MFM के MDES के कई region हैं. There are new center has come up last year. There are possibilities so all the student will get. कल मैं जो आऊंगा, I'll talk about all the number of student who has given the exam, कितने number of बच्चों ने exam दिया किस course में, and what will be the approx cutoff for all the courses. That will be mentioned there tomorrow in my discussion. मैं उसमें सारा detail में आपको बताऊंगा with proper presentation in the evening. But अभी के लिए क्योंकि you all are getting worried, you are thinking about it, आप सोच रहे हो जो क्या होगा, that's what I'm taking this question directly, So I have discussed about MDES and MFT. अब जो बच्चे वेट कर रहे हैं वो है MDES and MFT के बाद जो बहुत ही important course है, we will going next for BFT. So I want in a chat box, how many of you are here for BFT? Write here in the comments so that I can answer about BFT cutoff. क्या हो सकता है GAT math, और meanwhile मैं कुछ questions भी देखता हूँ बच्चों का. I can see, I want to see 100 plus like and 10 more new followers, for the channel. I can see 60% of you are the new viewer for this channel. So just do it right now. Next मैं BFT बताने वाला हूँ. How many of you are here for BFT? What is about BFT? Yes, I got one message, BFT. Sania Mandan has sent the thank you. Sania, you can go and just fill this form also. No problem. All the viewers, all our YouTube family are respected to join this particular course curriculum. आप आइए अपना बताइए, फॉर्म खोलिए, आपके लिए ही बना हुआ है. Me, BFT, one more student is for BFT. Avichandra Jha, very nice to see. I would like to see more student is here for BFT. How many of is here? I'll talk about the BFT later. I don't want to talk. So मैं जानना चाहता हूँ, is that enough number of students we have for BFT on YouTube right here, or else I'll move for some other course? See, I have immediately taken the MDES cutoff because number of the student was good for MDES. They were asking me before that I explained the MFT, but now I want to know, should I explain right away for BFT or should I take the time? If you want me to explain, make sure that you write in the comment box. You want me to explain now, more BFT student, like the video first before writing the comment. Yeah. So here बहुत सारी exclusive content भी है आपको जो मिलेगा. BDES का बताएंगे, BDES or we'll come for MFM also. BDES. Okay, we will go for I have already explained. If somebody is here for but videos you need to write, my dear friends. I'm looking for 10 more first video like. You can see there are many of you haven't liked the video. Make it 100 plus like and 10 new subscriber. There are 4 new subscriber has already joined the hand. Very good, but many of you haven't subscribed. If you will subscribe, you will get a lot of content which is going to be helpful for you further. It is going to helpful for you throughout the your further preparation and all this point. So you make sure that you subscribe the channel first. Once you are subscribing it, you are getting a lot of content, and that's really hidden contents are which is helpful for you. And now the journey has been started. You have already given the exam now, so
plan B and इस plan में भी आगे क्या होगा, क्या क्या करना है. So our role comes everywhere, wherever you are going it, like, you know, after the joining college also will be there with you. Now, coming back to the point, which has been raised here, I will first tell about the BFT only. We have done with MFT marking, MDES and BFT. Now BFT ka, if we'll see normally pattern, it goes high because students having a more and more competition. Students are having a more detail. Let's look at here. We have Mukesh sir, we have Deepti, and also let's see that what was their marks, how they got into the top 3 centers. So Deepti, do you remember your marks about the, like, you know, meanwhile Deepti will tell us the marks. Obviously, I mean, she had joined the year back, so I would like to know, obviously, Deepti marks first. So Deepti, आप बताओगे क्या marks था आपका? Sir, I don't remember my marks exactly, but yeah, my journal, I am from journal category, so my rank was 146. और आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे लमसम, वो याद है आपको? I guess like मैंने सिर्फ 6 to 7 questions नहीं attempt किए थे. I guess बाकी सब सही हुआ था मेरा. Okay, okay, you have attempted all the questions. All right, Yes. 140 approx. So I know last year rank 1 also, rank 9, rank 10. These are our students last year who have got a score in BFT. That's what I've taken. One of my favorite, you know, this course is BFT. If you look for it, completely BFT cut up, minimum may come down to, it is normally around 45 to 50, 42 for general. This is the general cut up. Each 5% come down for every category. So for when it comes to SC, ST and all, it goes to 35 to 40%, 30% and below that. So now coming back to the BFT cut up minimum, because that's the first question to the student, क्या होगा आपका? तो मुझे जो लग रहा है इस बार वो 42 से 45, this will be the kind of average for general. 50 for 45 तक हम देख पाएंगे, because 10-20 question लमसम, like, you know, दीप्ति ने कहा 140 प्लस उन्होंने सॉल्व करा था. दिस ईयर 120 130 से ज्यादा मैंने अभी तक सुना ही नहीं है. So students are not able to solve the paper only properly CAT का. If you guys agree with me, write here your comments are, so we'll get to know जो अच्छा नहीं आपको ऐसा हुआ आपके साथ. Yeah, and I'm so happy you guys made immediately this video likes, you know, 100 plus. That's really yeah. So when we talk about this and when we see, so when we look at the, one second guys. Well, so coming back to the session BFT, why the cutoff will come somewhere here, you know, why you think so it will goes in a this way. So look at all the, like, you know, analysis, look at it all this year student result. I'm sure that it is not possible a student will have a lot of, like, you know, these things content this year. Like you haven't, like, you know, anyone is here, could you please write it if you have solved 140 plus? Can you please write in the comment box? I would like to see in a chat if you have able to solve 140 plus. Okay, so if you are able to solve 140 plus, do let us know here in the comment box, you know, so that we will get to know. GAT paper was difficult in BDAS. Yes, it was difficult in BDAS. CAT device. So GAT, CAT and all people who have faced the problem and writing here, I would like to tell you, do write here, like, you know, do send your query here on this number and हम आपको help करने वाले हैं. हम GDPI और भी कई सारे classes ये भी शुरू करने वाले, हमने बताया था आपको. And I welcome all our 6 new subscriber on the channel. There are new people who have joined the family. You all are most welcome to in this Ignite India family, and Ignite India will
keep helping you for your prep, further details and all the plans. Now coming back to the BFT mark, which I said that why 42 to 45%, because most of the score what you're going to score here is that is between that only. You will not see a student are scoring more. So when I say 42 45%, that means the score is somewhere 50% is 75. So your 40% is around 60. So somewhere if somebody have a score 60 plus, somewhere around 65 in general, will get cut up in first round. And the possibly what I have said earlier also I mentioned, so more of you will get the answer, will get the cut up without any further these things. And this year NIFT will give the opportunity to most of the student. Now I want to know which cut up to discuss. I want here in a YouTube chat, BDAS already some people have already mentioned. I left all the math question except first 3 and 4. Okay, fill the above form. Team will help you to do better in next round. And you can ping me here also. I have shared my number. I have started getting the messages also with many of you. So here you can. Again, there are 2 new subscribers. Welcome to joining Unite India family. And things are there with you. Now I would like to know which one. We have discussed till now BFT, MFT, then we have discussed about BFT, MFT, and I think M Design. MFM is one of the very, very important course. So first, MFM or B Design, which one has to be the first discussed? I want to see how many of you are for marking this one, B Design, BFT. BFT, Anushka have already explained. Just now I have explained the BFT, CAT PDF before time. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ, you make sure admission NIFT उस पे आप mention कर दीजिए. Yes, I can see others has mentioned MFM. One of your friend has mentioned, want to know about MFM. Most of you are here for B Design. So sometime we should take a course. We should take a call, which is number of the people are less. I understand because less of you are able to join his voice. But we are having very special program like GDPI or situation test, studio test. Tomorrow, I think we are having a portfolio and GDPI session, which is going to helpful for most of the you. So you can join the hand along with the cut-up analysis, those class that will help you to know about your cut-up and as well as for your portfolio and other analysis. So both combined will start tomorrow. Now coming back to this particular session, I will be going to tell you more about how this step will work, how this, if we'll take MFM, like suppose your friend has asked. So if you'll see last year MFM cutoff was for general, if I'll come, that was 67 marks, which come to again 45%. So imagine last year paper, it was easy for MFM student, got a review marks and other things, but they are able to score between 67 marks for general and followed by for other category. They normally shortlist around 1400 student, 1400, 1500 student to fulfill the fill the all the seats in MFM category. If you will see now, to getting 1400 results or students, what will be the cutoff this year? If we'll take from top to bottom like this, yeah. Somebody has asked me question about the MDES. Obviously, I will discuss. So and we'll come for BDES also. Students have started sending me PDF also. I would suggest you, rather than sending me one message, 3 image, please send me also one compiled PDF how you have shared with NIFT. Don't send me separate images. Send me a compiled PDF for all 3 together. Okay. Now let's go on the next step. Next step over here is what will be the total marks maybe this year. इस साल आप उसमें से 10 नंबर तो ऐसे ही कम कर दो. अगर 67 था तो 55, 57. Why I'm telling with the initial this thing only. It is very simple, is very simple, is because 140 तक भी बच्चे नहीं पहुंच पाए due to the UI which is there. मतलब हिंदी में था passage, English दिख नहीं रहा था लोगों को. And then looking at those passages, answering it is difficult. Case, caselate, yes, sir. Or last ka 55 question, almost 60 question, which most of you have said, that was based on the passage oriented only, because that was a caselate, passage, case studies. So these things sections comes in last 60 question. So I don't think so. Even a single student this year is too difficult. Maybe somebody, I don't know, till now I haven't heard, has said that, okay, no, 140 plus मैंने बनाया.
ideally student who was in practice doing well in MFM, they were somewhere near 120, 130. उन्होंने इस नंबर तक के क्वेश्चन को वो पहुंचे हैं, and that number of the followers, I mean that number of this thing they were able to do it, but they are not able to engage enough more, like more than that. So somewhere in between 50 to 55 we can say, not even 55 plus also. This will be the cutoff for this one. So when we say 50 to 55, so it's come down in percentage, because I explain all in percentage. I started getting many messages from a student on 9972046911, and you are also most welcome to send it more and more. So अगर हम देखें इसको, इस कैटेगरी को देखें slightly, so that comes in percentage 15 into 4, so 35% almost. 38% आप count कर सकते हो, 37-38% will be a cutoff for MFM first round exam. And yes, because cutoff having a huge gap, so you have a big opportunity to do well in your GDPI and score well, है ना, उसमें कर सकते हैं. Without any further delay, I will come for BDAS cutoff, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में ये वीडियो देखने वाले हो, and you all are looking for BDAS, right? How many of you are here looking for BDAS? Very nice. 111 like for this video. BDAS, BDAS, BDAS. I can see already. Yes, more BDAS. How many of you are? I know most of you are for BDAS. So to get your number, to know your situation test, GDPI, all these things, है ना? I got a thank you message. Arta Subhas sir, मेरा GAT paper submit करने से पहले ही. See, this I have explained, Snehal. You need to go back in reverse. ऐसे बच्चे जिनका कि GAT paper submit नहीं हुआ, उनको क्या करना था एग्जाम में? Why they are not able to submit? कहाँ पे lack हुआ? What they are supposed to do it? This all things has been discussed in starting of this paper only, starting of this session only. आप जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा. हमने डिटेल में 2-3 बारी बच्चों को बताया. कई लोगों का पेपर सबमिट होने से पहले ऑटोमेटिक सबमिट हो गया. So you are not the one. कुछ क्वेश्चन ले लिए मैंने, बट BDAS के लिए मुझे बताना, आप लोगों को कुछ नोटिफिकेशन देना है. First, let me welcome all our new followers who have joined the Ignite India team today through the YouTube, and they are most welcome to be part of further also. And the many of you are upset, may not able to done your work properly. We were getting a call, that's what we thought to come and be a have a long live sessions. So I suggest you guys, in case you are having such kind of things, you fill the form, join us, have a one-on-one session. We will discuss about your plan, we'll discuss about your NIFT possible result, plan B and other things, and accordingly we will take as steps. So I suggest you all make sure that you contact and take a call accordingly. All right. Now BDAS cutoff. If you'll see the BDAS cutoff from last 3-4 years, it is somewhere around 50%, and expected this year BDAS cutoff will also goes down. Why the BDAS cutoff will goes down? It's very simple. When we talk about the BDAS cutoff 2, what happened in BDAS exam? What exactly happened in BDAS exam this year? जब आपका पेपर टीचर्स पास से देखते हैं, आप सोच के देखो, जब वो आपके पेपर को देखते हैं, फील करते हैं, दे एक्सपीरियंस इट, दे गिव यू मार्क्स अकॉर्डिंगली. तो एक तो एवरेज मार्किंग होगी, तो कटअप बहुत कम नहीं होगा BDAS का, बिकॉज BDAS कैट वेटेज इज मोर, इट्स 50%. तो टीचर विल हैव देयर हैंड्स ऑन होल्ड, जो अच्छा नहीं, उनको समवेयर वही मार्किंग करनी है, जो बहुत कम मार्किंग नहीं करनी है अगर आपने तीनों क्वेश्चन बराबर से बनाए. ऑल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ. यू मेक श्योर press the bell icon button, most important for the channel is, so that a lot of content will come for you. Now coming back to the part, very important part of this session is, तो अगर आप ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, आपका स्टेप क्या होना चाहिए. तो BDAS का कटअप जो मुझे लग रहा है, that will come down to somewhere 42 to 45%. In marking, if you will see 35 plus, 36, 35, थोड़ा 2-3 नंबर तो कम आएगा. 38, 39 आ रहा, तो that will come down to 36, 35, 34, ऐसे कुछ उस नंबर के आसपास में आएगा. But it is not going to be completely way ahead. It is not going to be जो अच्छा नहीं, अब आपका मार्किंग कम होके 30 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. क्योंकि गैट एक ऐसा पेपर था in BDAS, except GK, student was able to solve the GAT. I know students are, we have here Aditya, Adi, who has solved the GAT paper within 1.5 hours also. So अगर आप regular practice में थे, आपने करा है, तो you were able to solve the GAT.
Again, let me welcome 2 more new subscriber of the channel who have just subscribed the channel. Is it the informative, the contents are helping you? You are getting the idea what next? This is for CAT or GAT. It is not about GAT and CAT what I'm talking about, my dear all friends, all the new viewer who have just joined the Ignite India family today in this YouTube live post your exam. This is the average for all I'm talking about, you know, total exam marks. When we talk in percentage, so you talk in like, you know, okay, 100 marks for CAT, 100 marks for GAT, weightage of CAT is 50%. वेटेज ऑफ गैट इज 30%, तो क्या करें उसमें, तब क्या होगा, वो बात हम डिस्कस कर रहे हैं. इसका मतलब ये है. All right, so you got it. This is what the cutoff for your BDS exam. So that's how cutoff has been divided. Okay, BDS, MDS, MFM, MFT, BFT. अगर आपने अभी ज्वाइन करा है and you want to know for any course cutoff, possibly cutoff, tomorrow will come for more better filter analysis. But आज अभी तक जितने बच्चों का रिजल्ट आया, जैसा हमने देखा, अभी और बच्चों का हम देखेंगे, उसके बेसिस पे हमने आपको इनिशियल कटअप बताया है. बट दीज आर जस्ट आवर लाइक इन जैमसन व्हाट वी हैव सीन, दिस अ पैटर्न, जो इसके बेसिस पे क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा. So this is our initial this thing, but we will see next further. All right. So now, other than that, this all, like, you know, what you are supposed to do it, how you will prepare with us, how Ignite India will help you about the courses what we are starting from tomorrow. क्या क्या क्लास होगा, सेशन होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे. बट मैं आपको सजेस्ट एट द सेम टाइम ये भी करूंगा, जो आप जाके सबसे पहले इस वीडियो का इनिशियल कंटेंट देखिए. आप वो देखिए जहाँ पे कि हमने ये डिस्कस करा है, जो मार्किंग क्या है, पैटर्न क्या है, इस साल क्या क्या चीजें इफेक्ट करेंगी मार्किंग पैटर्न को. ऑलराइट, I am getting many of the messages on 99 number. I am writing here in the chat box this number also. We are here. You can ping me your detail to take a feedback. So आपको क्या possibilities है, किस number में कहाँ मिलेगा, yeah, and how Ignite India is helping you chance to getting into general MDes. मानसी चांस है, मैंने डिटेल मेंशन करा है, प्लीज चेक कैंपस, बीडेस, एमडेस. कैंपस डिटेल के बारे में भी हम बात करेंगे. बीडेस आई जस्ट कंप्लीटेड and MDes MFM has been discussed already. So these are the YouTube question. Thank God I am done in much better way in CAT section than I expected. Thank you, sir. Welcome here Krishna to knowing it. You have done well. We are happy to hear that. आप लोग जरूर शेयर करिए अपने experiences. I would like to tell Mukesh sir here to explain the courses. You are having a classes tomorrow, day after, and there is a link also has been shared. मैंने number share किया है. So Mukesh sir, could you please explain the student how and what all session we'll keeping it. So without any further delay and excuse, you can do it. Either you are office going, either you have a board exams and all. Alternative 3 session में हम लोग portfolio PI and situation test, studio test का session रख रहे हैं, which you can start from tomorrow. Being introduction. Sir is here right now, so sir will explain you all the plan. और 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा विद एक्सपर्ट्स. स्मूथली आप करोगे अभी से, एग्जाम के टाइम में आपको कोई रस नहीं होना है. राइट, ऑल दिस स्टार्ट बाय 6-7 PM and maximum 8-9 it will get over. So by the time if you are going outside also you will be in home and very smoothly. So sir आप सारी चीज को डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करिए बच्चों को. काफी लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं. And they are regularly subscribing your channel also. The new, we are getting a new family member. So what offer, how it is, and how it start, and what they need to do to join it tomorrow. क्या करना होगा वो भी बताइए आप. Over to you. Okay, sir. Welcome, students. Welcome to all our YouTube viewers and all our students. So from tomorrow itself, we are going to start live sessions. So what you need to do, you need to just fill up a form that is given in the chat box. That is the pin message. You need to just fill up the forms. Our team will connect and sort it. And from 6 to 7, you will have a class. So that will be the 1 hour class will be there. So sir will explain you from scratch each and everything. So first you need to proceed. You need to just do the basic things. Sir will teach you some basic things. After that, slowly, gradually, after developing all those basic steps, after that we will proceed with the advanced things. And in this way, we can complete your whole syllabus. So some of the students have also their board examinations is there, then their college and their schools are there. So keeping in mind all these things, so we will keep it as at evening times, and it will be just a 1 hour. After 1 hour sessions,
You need to just take out 1 more hour to do a practice. I hope all you have got it. Is there any questions regarding situation test class? You may ask in the chat box. I will help you. So I just request you to just fill up the form. Our team will just connect with you. Hello. Over to you. कोविड सर से चेक कर लीजिए, कुछ करना है क्या पूछ लीजिए। Well, so as you have seen that these sessions and these ideas, classes are, so always we have to look in life, what next, what has to be our next call. So rather than taking your more questions, I decided today to come live, जहाँ पे कि मैं live में questions लूँ, आपको बताऊँ, team आपको बताए और जिससे कि आपको help हो. So that's what we have come. So is that helpful? The session is आपको काम करा इस session ने, and you have learned from this or not, that I want to know. I can see many of you have subscribed, many of you have joined the session, you are there since quite long time. Regularly also, you have shared me your work. I promise you, whomsoever has shared me their work and going to share me right now, all of you will get the personal remark. आप अपना CAT का paper share कर रहे हैं, I will make sure that I will mark you for that paper. You will get to know about your GAT also. और सारी चीजें भी, तो आपको अगर डिस्कस करना है, मार्किंग लेनी है, and however you want to come, obviously you can come, join the hand, you can get all details, but these are things based on our analysis. Wait your cutoff, wait tomorrow class, wait your all the prep and other things. So anything is there, do let us know from your side. Numbers have been mentioned. While talking to you, I am mentioning this number here in the chat box right now. And अभी का अभी आप हमसे जुड़ सकते हैं, इसका डिटेल ले सकते हैं, and you will have all the solution on this chat. So MDAS का मैंने already explain किया है. Right now MDAS and BDAS student, they can share me their paper for a further feedback. And the other students, I would like to tell my dear friends, make sure that you keep in contact. Whatever marks other paper और आपको solution के बाद BFT MFM का आता है, we'll come back again for a further feedback and sessions discussion. But वो जब होगा उससे पहले अभी के लिए I will suggest you that जो आप हमारे contact में रहिए, आगे का plan बताइए, plan B क्या करना है वो बताइए, और अभी एग्जाम्स बाकी चीजों के लिए क्या कर रहे हैं, और आप ड्रॉप आउट हो तो आगे क्या प्लान है. सर, विल यू रिस्पॉन्ड विद द एक्सपेक्टेड मार्क्स टुडे? अल्पना, आई थिंक यू हैव ज्वाइन लेटर. थोड़ा आप वीडियो को पीछे चेक करके देखिए, आपने अभी ज्वाइन करा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पीछे आप चेक करिए. यू विल गेट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. ईच कोर्स, every course, it has been mentioned, what is the expected marks based on student analysis. एग्जाम से 1 बजे से खत्म होना शुरू हुआ, MFT, MFM, BFT. That's what in a series I started. BDAS, MDAS. मेरे पास 100+ solution for BDAS, MDAS भी आ गए, and I'm expecting by tomorrow evening 1000+ solutions. Basis on that, again we will come for a next round of marking and other detail. But if you have anything, do let us know. आज आपके साथ अभी Naveen sir जुड़ गए हैं. Even Vijay sir is also here, I can see. So they will also keep their point. And how important is your second round? How important is your current round? What you are preparing for? अभी क्या जरूरी है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ने 150 में 140+ या 130+ नहीं बताया जो उन्होंने सॉल्व करा है. So that means all the cut up and all the competition is there in between,
140 130 तो टॉप मार्क्स हो जाएंगे इस साल के. So you will have all the cut up and competition between 100 to 60 or 50. So MFM, MFT, M design ये सब में तो बेटर हो ही गया चांसेस करने का, और B डिजाइन में भी और बेटर हो गया. And your some friend is asking me, can you review in a voice note? Yes, with reason in voice note I will send what is the expected marks you will get in the exams, how and what is possibilities are. So let's take team questions from you, what you are writing here. I am getting so many. You all are, who is sending me the questions, you all are requested to subscribe the channel also. Let me welcome 3 more new subscribers on channel. You all are most welcome in Ignite India team right now. And all the cut up which has been discussed, which I am telling to you right now, that has been there. So I would like to welcome all of you. The way you have done it, that is excellent. The way we are working on, that's really good. So you all are going to be the next topper. You will do good. Is just keep believing in your ability, keep believing on your these things. Arnav have joined after so long. अर्नव, आपने आज शुरू में सेशन ज्वाइन नहीं करा था, अभी ज्वाइन किया है. कैसा रहा पेपर, बताया भी नहीं. जो कैट पेपर था वो मेरा अच्छा हुआ. आई वाज एबल टू फिनिश ऑन टाइम, सो आई वाज वेरी हैप्पी. लेकिन उसी का काउंटर मुझे गैट में फेस करना पड़ा, जिससे मूड थोड़ा ऑफ हो गया मेरा. Oh, great, great. That's really good to know. But ये बताओ तुम्हें कैसा लग रहा, मार्किंग वगैरह कैसी रहेगी तुम्हारी? सर आई थिंक आई एम प्रीटी मच श्योर कि मेरा कैट पार्ट मेरा स्ट्रेंथ है और मैंने उसमें बहुत अच्छा किया है. इनफैक्ट मैंने विजेंद्र सर के टिप्स फॉलो किए हैं एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू हेल्प मी. गैट में मुझे लगता है कि देयर वर क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑल, जिसमें मैंने प्रीटी वेल किया है. लेकिन फिर मैथ्स में एक क्वेश्चन थे जो बहुत कठिन थे, और फिर अगेन आई फेस द प्रॉब्लम कि मेरा भी वही हुआ कि पेपर खत्म होने से पहले ही देयर वर 3 क्वेश्चंस दैट वर लेफ्ट, वो सबमिट हो गया अपने आप, तो वी कुड नॉट गो बैक एंड राइट. सो आई वाज लाइक चलो ठीक है. तो आई कांट से एनीथिंग अभी क्या होगा. नहीं नहीं, मैं श्योर हूँ. अगर आपने कैट का पेपर मुझे भेजा नहीं है, कैट का पेपर भेजो, ठीक है. यस सर, मैं भेज sure your core, I mean you will do good. That मुझे लग रहा है, क्योंकि I know, I mean the way you guys are preparing, the way you have solved your test paper and all, so I have seen that one. Okay, जो आपने कितना बढ़िया करा है. तो possibilities है, many of you are already sending me. तो आपके पास जो है और भी possibilities है उसको बढ़िया करने का, अच्छा करने का. ओके. हाँ. तुम्हें कोई प्रॉब्लम, तो मेजर प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना वाइल एग्जाम? नो सर, नो मेजर प्रॉब्लम्स. वाईफाई सब मेरा ठीक था, सो उनके तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. माय पेपर वाज गुड ऑन दैट नोट. That's really nice, because मुझे तो सुबह 6 बजे से मैं उन बच्चों से डील कर रहा था जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग जो उनका एग्जाम हो जाएगा, और टचवुड उनको एक्सेस वगैरह हो गया, तो आई वाज हैप्पी जो चलो at least we guess something, and that happens because not one, there are many students who haven't given the test. So I was expecting जो obviously ये इफेक्ट नहीं करेगा उनके एग्जाम को फाइनल, and that is what happened. Now उसके बाद 9 बजे के आधे घंटे पहले से तो ऐसा तूफान मचा. एक तो लिंक नहीं दे आया था, तो 8 से 9 वो डिस्कशन में चला गया, यू नो, लिंक लिंक आया. मतलब you guys are in regular, I have hardly seen in regular batch much discussion, क्योंकि आप इग्नाइट इंडिया ऐप से भी बहुत टेस्ट वगैरह ऐसा दिया था ना अपने एप्लीकेशन, और ऐसे ही मुझे तो कुछ बच्चों ने ऐसे बोला जो सर हमारा एप्लीकेशन ज्यादा यूजर फ्रेंडली था, यहाँ पे पैसेजेस ज्यादा डिफिकल्ट हो रहे थे देखने में, हिंदी इंग्लिश और ये सब. So I'm keep getting a many response and many of the student work. I would like to tell you, if you are sending me PDF, please don't send me 3 page. For me also it's difficult. Write your name in your PDF. Send me one single PDF for all 3 page. Okay, which is very very important. One single PDF you send me. It will be better for us. है ना, जो भी भेज रहे हैं. In fact, the students are here in a class. For them also, I request, so you send me the one single PDF, not a, like, you know, separate PDF for all. And all the possible cut up, I will again like to announce for BDES, MDES, MFM, MFT, ये सब जो है, that I have already shared. You know, so you can look for this. Yes sir.
So moving forward to the next particular section, here as a expert, Govind sir, who was faculty of NIFT, former faculty of NIFT, he was course coordinator as well. When you go like how we have a department head, so we in the NIFT it's called CC, and he worked in many industry, and a known Indian designer. He has participated in many fashion show and represented India many times in Swiss fashion and Indo's fashion and Wow Fashion Week. So sir will tell you his experiences and as well as looking at, because very closely sir has monitored the pattern, paper, question, exam, and you all want to query. I've seen many of you are on YouTube, and here the major question is what will be the possible cut-up? Kya hoga? Mera hoga, nahi hoga? So looking all this and our plan about the tomorrow onwards, your GDPI day after situation test, all this in detail. Next hour of time, sir will discuss with you. So he's here now. Once again, welcome, sir. We can start this discussion now with you. Thank you, Krishna, sir, and thank you. So many viewers are already there on the YouTube as promised. I'm here today. So we were closely the watching the exam, and we were trying to help you as much as possible. The entire Ignite India team, we were in the touch, and you have seen the question paper also, where many things which we have discussed that help you, and either it's a CAT paper or GAT paper. Those tips were really helpful. Again, we have proven that Ignite India as a team. So I want to congratulate everybody in Ignite India team also, because everyone, they work hard. Krishna sir, Vijendra sir, Akhilesh sir, Naveen sir, Mukesh sir, Sanjay sir, and Pooja ma'am, and other all faculty team members. So they have really worked hard, and I think you all were benefited. YouTube family and other student. What now? Question is, what is next? Okay, now who is wise person? Who is wise person? Somebody who have always plan B, or uske bhi aage plan B ka bhi plan B, means plan C. So strongly I would recommend you, instead of spending a lot of time like what will be the result, what land, and how much marks I will get. Yes, you can do that, right? So you make PDF, you send it to Krishna sir and the team also. Number is here that you do that, but do not to start thinking too much about it. Instead of that, you start making your plan B. For plan B and plan C, you can take help from the Ignite India team. You can contact us. That will be the right call. Second thing, I want you all, UG, PG, all the everybody. If you have GDPI, start preparing for that. If you have situation test, start preparing for that. And also similar kind of top 10 institute, wherever you feel, whichever city you are, whichever is closer to you, start filling the form, right? And take that experience also, give the exam and just wait for result. So this will actually help you. And how much how much it was helpful, especially for the CAT which we have shared. I want to learn from you in the chat box. If you, I want to see, send your answer paper for review. Yeah, so किस चीज का PDF बनाना है. So ये जो है PDF आप कर लो, but wiser decision will be your plan B, right? हमेशा प्लान बी और उसका प्लान सी, सो जो भी और दूसरे टॉप इंस्टीट्यूट हैं, you can fill form and wait for result and start preparing for next round. That's all. That's so जो करना है उसमें करना है, प्रेजेंट में रहना, फ्यूचर का बहुत ज्यादा मत सोचो आप. कल भी मैंने आपको कहा था. तो आई होप सब ठीक हो गया है, सारे लोग के एग्जाम आपके हो गए हैं, सब बढ़िया है, टीम ने भी आपको हेल्प किया. एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस? अर्नव, संजना, दीप्ति, anybody?
You have any question? सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। क्वेश्चन सर, ये ना जब हमने अपनी कैट पेपर दी थी, उसके बाद वी वर सपोज टू अपलोड टेकिंग द फोटोग्राफ, तो लाइक द एप्लीकेशन में तो ठीक दिखा रहा था लेकिन फोटोग्राफ अच्छा नहीं आया। सो शुड वी व्हाट शुड वी डू इन दैट केस? क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए इसके बारे में या छोड़ देना चाहिए, ज्यादा उतना मत सोचो। आप क्या कर सकते हो कि देखो, क्योंकि अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो अपलोड उसी समय जो आपने किया था वो ठीक ही होगा उतना सब। अब जो एग्जामिनर है आपका, उसको भी समझ में आता है उतना कि अभी ऑनलाइन हुआ है और हो सकता है अपलोड करने में वो उतना समझ जाएंगे। वो उतना एक्सपर्ट रहते हैं कि अगर आपका पिक्चर खींचने में पर्सपेक्टिव टेढ़ा हो गया है या क्लैरिटी नहीं है उतना, वो इमेजिन कर लेंगे। मेरे हिसाब से आपको ज्यादा उस पर सोचना नहीं चाहिए। और अगर कुछ है ऐसा तो आप ट्राई कर सकते हो, एक मेल लिख दो खाली कि ये ऐसे हुआ था, आपको लिखना है तो अपने एक रिकॉर्ड बनाने के लिए आप लिख दो बस। ओके सर। ये आपको उसी समय बताना चाहिए था। अगर कुछ हुआ था, ये हमने बार बार आपको कहा था कि हेल्पलाइन नंबर है, सारी चीजें, तो उस समय बताओ कि अपलोड में दिक्कत हुआ है, वो कर अभी भी पीटी। लेकिन अब उस पर ज्यादा सोचो मत, करना है। उसके बाद भी अगर मन में बार बार आ रहा है तो अपने आप को कन्विंस करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए सबसे जरूरी है आपका खुश रहना। यस सर। तो बस आप लिख दो और बाकी जो पीडीएफ वगैरह बनाया है वो सब आप भेज दो। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा कैट में? क्या क्वेश्चन कुछ तो मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने भेजा भी, बना के भी भेजा है रिव्यू के लिए। आपका क्या ब्रीफली एक बार आप मेरे को बता देंगे कि क्या बताइए कितने? यस सर। तो बेसिकली मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया, तीनों क्वेश्चन में उन्होंने हमें 6x6 इंच फ्रेम दे दिया, तो दे वर ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट अस इन साइज। तो ये मुझे समझ में आ गया कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आई वाज प्रिपेयर्ड। तो पहला वाला क्वेश्चन वाज आई चोज लाइक टू ड्रॉ, इट वाज अ कॉम्पोजिशन, तो वहां पे मैंने विजेंद्र सर का रूल ऑफ थर्ड कंपोजिशन में क्या था क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन थे कंपोजिशन के? There were 3 options. पहला वाला was you need to draw this winters का scene बनाना है, और उन्होंने एक prop दिया है that is a tree and a branch, उसे हमें compose करना है उस composition में। तो one was the winter night, दूसरा वाला था coffee with a friend, and third one was the children playing outside. तो I chose the coffee with a friend, तो मैंने विंडो के बाहर दिखाया है एंड इट्स एन इवनिंग सीन। तो और मतलब ठंड है, तो लाइक मी एंड माय फ्रेंड हम कंबल ओढ़े कॉफी पी रहे हैं। सो दैट्स व्हाट। तो पहला क्वेश्चन था कंपोजिशन, उसके 3 जो है वो ऑप्शन थे। दूसरा क्या था क्वेश्चन? तो दूसरा क्वेश्चन था कि हमें एक रेंडर करना है। इसमें भी 3 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन मुझे याद नहीं, बट मैंने चुना लाइक रेंडरिंग दिखानी है स्टेजेस ऑफ एप्पल, half eaten apple from fresh to rotten. तो it was observation based question and color sensitivity था यहाँ पे। तो again accordingly मैंने 4 frames में divide किया 6x6 इंच को, and फिर मैंने उस हिसाब से दिखाया। अच्छा, और इसके बाद तीसरा क्या था क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन वाज अ डिजाइन रिलेटेड क्वेश्चन, जहाँ पे वन ऑप्शन वाज टू डिजाइन अ पोस्टर कॉल्ड गिफ्टिंग एयर टू अ फ्रेंड, वी हैड टू डू इट। एंड अनदर क्वेश्चन ऑप्शन बी वाज टू डिजाइन अ पैकेजिंग फॉर अ परफ्यूम, फॉर अ परफ्यूम ब्रांड। तो मैंने परफ्यूम ब्रांड वाला चुना। देयर वाज ऑप्शन सी आल्सो, वो मुझे नहीं याद, लेकिन मैंने ऑप्शन बी चुना था, और उसमें मैंने पोमोग्रेनेट से इंस्पायर होके पैटर्न क्रिएट किया था, पोमोग्रेनेट ब्लॉसम। तो देखो अब जो है आप देखोगे अगर, तो ये ऑलमोस्ट सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना? इस तरह के कुछ जितने भी टाइप के आपके कैट के आपने जो बात की अभी, इनफैक्ट अगर शेयर ऑप्शन हो यहाँ पे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि लेआउटिंग वगैरह जो आप कह रहे हो वो सब आप देखोगे। एक सेकंड, तो वो कल भी हमने आपको रात तक पोस्ट किया है। यस सर। देखो देखोगे अगर तो इग्नाइट इंडिया इंस्टाग्राम में दिखाता हूँ आपको, वहां पे कल रात तक हमने आपको पोस्ट किया है। इस तरह के क्वेश्चन होंगे, और हमने भी आपको कल जो हमारा डिस्कशन था उस समय हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन वही 3-4 आपको आएंगे, ऑप्शन होंगे उसके,
और आप उसकी लेआउटिंग वगैरह कर लेना। लेआउटिंग तो इनफैक्ट करके बताया हुआ है आपका यहाँ पे। हाँ सर, आपने स्कार्फ के लिए बताया था एंड दैट वाज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर द परफ्यूम डिजाइन रैपिंग के लिए भी मैंने वैसे ही लेआउट से इंस्पायर होके किया था। तो ये देखो, आप यहाँ भी देखोगे तो वही है ना, 6x6 यस जो आप सर। बोल रहे हो कि लेआउटिंग कैसे, तो इसी सब ये जो है ये सारे चीजें इसमें कहीं ना कहीं से तो आप देखोगे कि बाकी भी जो आपके कंपोजिशन थे या उससे देखो, अब यहाँ पे मेन्यू कार्ड है, वहां पे आपको वो वहाँ साथ में बैठ के दिख रहा है। वीडियोज वगैरह भी अगर इनिशियल अगर याद करो तो वैसे हैं, या फिर जो विजेंद्र सर के आपके क्लासेज हैं वहां भी बहुत अच्छी तरीके से बाकी टिप्स भी आपके साथ जो है ना डिस्कस किया हुआ था। यस तो सर। काफी चीजें हैं जो कि है, तो इस पे अब तो कैट हो गया। अभी गैट में कैसा था बताइए, गैट में कैसा आया? सर तो गैट में स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैथ्स के थोड़े अच्छे थे, लेकिन उसके बाद मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो सेविंग से रिलेटेड थे और शायद मतलब मैं उन्हें समझ नहीं पाया, तो मैंने उन्हें सॉल्व नहीं किया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। मैंने सोचा लेकिन था आपको कि निगेटिव मार्किंग से कैसे डील करना है ये तो हाँ उसमें हाँ मैंने देखा था सर। यस यस, मैंने देखा था वो। तो निगेटिव मार्किंग में अगर आपको उसमें बिल्कुल चारों नहीं आ रहा है तो टच नहीं करना है, 3 आ रहा है रेगुलर रो क्लास में तो आप चांस ले सकते हो, क्योंकि 0.25 जो है वही आपका डिडक्ट होगा। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है यस या सर। बाकी चीजें जो पोस्ट भी है इंस्टा पे है, ये भी शेयर किया हुआ है आपका, है ना? वो यस सर। आपने देखा था, समझ में आया था आपको वो? यस सर, मैंने एक्चुअली इनफैक्ट उसी वे में सॉल्व भी किया था पेपर। लाइक कुछ कुछ क्वेश्चन थे जिनमें मुझे ऑप्शंस मिल ही नहीं रहे थे, 25-25% था, लेकिन कुछ में 50-50 था, तो वहां पे मैंने थोड़ा ज्यादा फोकस किया बिकॉज वहां पे करेक्ट आंसर बिल्कुल मिलने का चांस बिल्कुल है। वही यहाँ पे जो है ना, देखो 25 जो है वो आपको एक्चुअली यहाँ पे भी लगता है शेयर नहीं है, या शेयर है स्क्रीन नहीं है, तो आप देखो यहाँ तो आप अगर देखोगे यहाँ पे जो आपका इंस्टाग्राम है, यहाँ पे देखो 0.25 जो है ना, वो आपका हटना था। वन एक सही इसके लिए तो सिंपल सा था, बहुत ज्यादा मुश्किल भी यस नहीं सर। था। तो ये देखोगे तो ये आपके सारे आपको समझाने के लिए सब बताया हुआ था। ये नॉट श्योर यहाँ पे अवॉइड, ये पहले भी लिखा कि इसको अवॉइड करना है। अगर चारों बिल्कुल ट्रेसलेस है छोड़ दो आप उसको, पे अगर रेगुलर हो करना है, और ये तो बिल्कुल करना ही करना है ना? यस सर। यस इससे सर। हेल्प मिला? यस सर, हेल्प मिला। तो ठीक है, सही डायरेक्शन में आपने किया है। देखो, जो आपको हमको सबको करना चाहिए था वो हमने कर लिया है ना? यस सर। अब ज्यादा इस पे आपको सोचना नहीं है, जैसी चीजें हैं जो हमने की हैं तो आप ऐसा कर लेते हैं कि अब हम जो है नेक्स्ट जैसे बताया कि आप अपना वो सारी चीजें आप यहाँ से देख लो। जो प्लान बी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर भी ध्यान दो, रख लो जहाँ जो सिटी आपके पास में है ना? यस सर। यस उसके सर। हिसाब से देखो 100 ये श्योर है कि अगर आपने अच्छा किया है तो शॉर्टलिस्ट तो होगा ही निफ्ट में। इसलिए आप सेकेंड राउंड जो है वो उसके लिए, चाहे वो आपका सिचुएशन टेस्ट हो या जीडीपीआई हो, या आप तो यूजी में हो ना, यू आर फ्रॉम द यूजी, यस सर। यस यूजी सर। तो आप अपना सिचुएशन टेस्ट शुरू कर दो। उससे आपका एनआईडी भी अगर दिया है, आई थिंक एनआईडी भी दिया है ना आपने? यस सर। यस सर। तो एनआईडी दिया है तो उसका भी आपका उसमें भी आप प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि वहां भी स्टूडियो टेस्ट होता है। अब आगे क्या होगा भी हो सकता है, क्योंकि कोविड ऐसा लग रहा है कि कम होगा, के बाद हो सकता है कि वो होगा, तो उस केस में आपको हेल्पफुल होगा। नहीं तो फिर एकदम ऐसे सडनली रिजल्ट आ जाएगा। जब ये अगर एकदम ठीक होगा सब कुछ, तो जितना अभी ये ऑनलाइन में आपको जो है ना प्रिविलेज मिल रहा है और इतना पैम्पर किया जा रहा है कि निफ्ट भी आपको बता रहा है, इतने सारे नोटिफिकेशन, ये सब बंद हो जाएगा। याद रखना, एकदम नेशनल इंस्टीट्यूट है, नंबर 1 इंस्टीट्यूट है सारे, वो स्ट्रिक्ट हो जाएंगे अपने रूल पे। उनका टाइमली कैलेंडर, कॉलेज कब खुलना है, कितने बजे क्लास होगी, एक एक चीज सबमिशन तक एकदम टाइमली होता है। इस तरह से प्रिविलेज करके इतनी बार नहीं बताया जाता कि निफ्ट में, तो अभी ये सारा पैम्परिंग बंद हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल उसी हिसाब से रहना कि जैसे ही कोविड ठीक हो आपको एकदम वो फिर टाइट कर देंगे, वो एकदम अपने जो है ना फ्रेम में वो ले आएंगे, सब जैसे होना चाहिए वैसे होगा फिर। यस ठीक है, सर। तो वो उस हिसाब से करो आप। बाकी लोगों के कुछ क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, कहीं कोई और अर्नव या कोई किन्हीं को पूछना है, उसके बाद जो है कृष्णा सर को मैं हैंड ओवर करूंगा, और उसके बाद अपने हिसाब से वो देख लेंगे कि क्या आगे करना है। तो दो तीन चीजें जो हैं
मैं चैट से कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ. Where can I send my answer? So you can send on the number shared, or otherwise you can send 914-888-2412. So this also we will be. This is a WhatsApp number. Do not call. Just send on this number. So if you will send on this number also, we will finally what we will do. We will collectively we will keep together, and you will get feedback from the team. So you can share here also. All right. और बताइए अर्नव, और कुछ है क्वेश्चन? यूट्यूब पे सर कट ऑफ निफ्ट का कितना? तो ये सब चीजें जो है ना, यही सेम वही मैंने आपको बताया है कि जब आपको अब जैसे शाम हो चुका है तो आपको लगेगा अच्छा काश ऐसे सुबह होता मैं घूम ले. तो ये ह्यूमन जो है ना टेंडेंसी है, बिल्कुल ये उस पर आपको ट्रेन योर ब्रेन, आपको कंट्रोल करना है. और जो जिससे फायदा होगा, कुछ सीखने वाली चीजें हैं वो सब करो. कि मान लो अगर आप जो है ना सिचुएशन टेस्ट अभी शुरू करते हो, प्रिपरेशन अभी मान लो शुरू कर दिया, तो उसमें जो सीखोगे वो सेमेस्टर थर्ड में भी वहां पे है, सेकंड में भी, तो वहां सारी चीजें काम आएंगी. चीजों को माउंट करना हो या प्रेजेंटेशन करना हो, बाकी सारा वो निफ्ट में आगे काम आएगा. ऐसा नहीं कि यहाँ करना, या फिर उससे जो आप बनाओगे दैट यू कैन यूज फॉर योर एनी प्रोडक्ट और एनीथिंग. इफ यू क्लिक प्रॉपर पिक्चर यू कैन यूज फॉर NID पोर्टफोलियो, है ना. तो वहां पे वो काम आ जाएगा. बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकते हो, या सिचुएशन टेस्ट में कुछ अच्छा मॉडल बनाया, फिर लर्निंग है, अपना काम आप करते रहो, जो आप कर सकते हो वो करते रहो. दूसरा जो और क्या कर सकते हो, प्लान बी प्लान सी कर लो. कुछ और समझ में आ रहा है, जैसे जो कॉलेज है, जैसे मान लो कोई और आपको जाना निफ्ट में ही है, ये श्योर आप रखो निफ्ट में ही जाना, लेकिन ऐसे रख लो उसको. उसके बाद सो दैट यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस. तब आपको फिर जब ये सारे सिचुएशन टेस्ट सब खत्म हो गए, फिर आप एक ऐसे 1-on-1 अपने पेरेंट्स के साथ जो है ना वो काउंसलिंग का सेशन कर लो. उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे भाई इसमें ये ऐसा प्लेसमेंट है, इसमें ये अपॉर्चुनिटी है, इसमें ये है. अब कई लोग के जैसे कुछ हो सकते हैं कि रिजर्वेशन ऐसा हो कि नहीं, हमें अपने घर है उसके पास में रहना है, यहाँ अप्लाई करना है, इसी सिटी में रहना है, इसी निफ्ट में जाना है. सो इन दैट केस यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस. ठीक है, इसलिए हमने आपको पहले भी जो लोग इंटरेस्टेड थे उनको NID भी बताया है, कई लोग को UCEED भी ऐसे बताया, तो कई लोगों ने निफ्ट NID UCEED सारे एग्जाम दिए. तो उसी तरह से अभी आप देख सकते हो. उस सब के लिए आप कृष्णा सर से मिल सकते हो, या प्लान बी सेशन मेरे साथ भी कुछ हम लोग प्लान करेंगे. ऑल्सो वी आर गोइंग टू पोस्ट सम वीडियोज रिव्यू वीडियोज अबाउट द ऑनेस्ट रिव्यू. ऑनेस्ट रिव्यू जो है दूसरे ये जो निफ्ट है NID है, ये सारे जो इंस्टीट्यूट हैं ये तो अच्छे हैं ही, इसमें कहीं कोई इसमें, और इसी में हम आपको हमेशा कहते हैं कि आप फोकस करो, ट्राई करो कि इनमें आपको जाना है. लेकिन उसके बाद जो और इंस्टीट्यूट हैं जो कि काफी ईयर से एस्टेब्लिश हो चुके हैं इंडस्ट्री में, उनका नाम है, सो दैट ऑल्सो कुड बी ऑप्शन. और जब फाइनली आपका क्या होता है, CV जो आपकी होती है वो उसमें क्या देखा जाता है? देखा जाता है आपने इंटर्नशिप कहाँ से किया, GP आपने कहाँ से किया, आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं. तो इन केस अगर कुछ ऐसे किसी को, तो ये मत समझना ऐसे ये एग्जाम मेरा कुछ किसी को इन केस अगर होता है, यूट्यूब पे हो कहीं आप सुन रहे हो या इस क्लास में हो, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है. 4 पेपर जो आपका वो 4 पेज या 3 क्वेश्चन कैट के, ये वो डिसाइड नहीं करने जा रहा है कि आप क्रिएटिव हो कि नहीं, आगे आप अच्छा कर सकते हो कि नहीं, और पूरा सब कुछ अच्छा. ये तो बिल्कुल पैनिक बिल्कुल ही नहीं करना किसी भी हालत में. पूरा सब हम लोग, मैं साथ में हूँ, कृष्णा सर, सब लोग इग्नाइट, बाकी पूरी टीम आपके साथ में है. तो बिल्कुल ये कभी अगर किसी के साथ होता है इसमें से, तो आप जो लाइव हो अभी आपके साथ नहीं हो रहा है. बाकी जो कोई YouTube पे हैं वैसा कोई अगर है तो उन सबको हम लोग एश्योर करते हैं जो भी होगा पूरा जैसे प्रॉमिस था वैसे ही है. हम लोग हमेशा ही आपके साथ में, जब जरूरत हो वी विल कनेक्ट यू, विल गिव यू ऑल गाइडेंस एंड यू कैन ट्रस्ट अस, वी विल नॉट मिसगाइड यू. ऐसा नहीं कि कुछ आपको कोई उसमें हमारा पर्सनल कुछ इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं. बिल्कुल हम लोग एकदम ऑनेस्ट सपोर्ट देंगे, ऑनेस्ट एडवाइस आपको मिलेगा. और उसके बाद भी छोड़ो ये, जैसे कि एग्जाम से पहले कल भी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको अगर कोई अपना लेबल शुरू करना है, आपको अपना कोई बाद में जॉब के लिए, जैसे आपको जॉब ही कॉर्पोरेट ब्रांड्स हैं उसमें आपको जॉब करना है, कहीं कोई गाइडेंस चाहिए, वो हम लोग वी विल बी ऑलवेज देयर. दिस इज द
lifetime, like you have built, you are part of the Ignite India family. So we all are there to help you. दो चीजें फिर से मैं रिपीट कर दूंगा कि प्लान बी प्लान सी जो है बैकअप का बैकअप और उसका भी बैकअप आप रखो, ठीक है। तो उसके बाद जो है जो अभी करना है, ये सब जो क्वेश्चन आप कर रहे हो कि पूछना मेरा कितना कटअप है कितना है, ये बिल्कुल अब जो है वो भी हम लोग पोस्ट कर देंगे। ऑलरेडी वीडियो वगैरह हम लोग आपको पोस्ट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। कटअप का जो पूछ रहे हो यू विल गेट पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, वी विल बी पोस्टिंग लास्ट टू लास्ट ईयर सारे वो हम लोग आपको पोस्ट कर देंगे एज अ पोस्ट। आप स्क्रॉल करोगे 10 स्लाइड्स का होगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगे। तो आप इंस्टाग्राम फॉलो करते रहो, यूट्यूब पे भी डाल देंगे, वीडियो भी डाल देंगे, आपको सारे वो मिल जाएंगे। कैंपस वाइज निफ्ट के रिव्यूज जो हैं वो भी आपको काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही, अभी तो सिचुएशन टेस्ट भी नहीं, उससे पहले भी आप देखोगे हमने पोस्ट किए हैं। और अपडेटेड जो रैंकिंग है, चाहे वो इंडिया टुडे का सर्वे हो या बाकी जो सर्वे हो या स्टूडेंट सर्वे हो, तो वो सारे उसके बेस पे हम लोग आपको जो है देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि यहाँ, तो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। बाकी सारे निफ्ट कोई भी इंस्टीट्यूट जो भी कोई भी आप देख रहे हो या एनआईटी, उनके करिकुलम सब सेम है, करिकुलम में कोई चेंज नहीं है, एक ही जगह बनता है, एक ही टीम बैठ के बनाती है। फैकल्टीज भी जो है सीनियर वो ट्रैवल करते हैं यहाँ वहाँ, जैसे निफ्ट दिल्ली की जो फैकल्टी जो पटना कांगड़ा यहाँ सब जगह वो लोग ट्रैवल करते हैं। इवन व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो निफ्ट दिल्ली से फैकल्टी जो है वंदना नारंग वो उन्होंने ट्रैवल किया था और बैंगलोर आके उन्होंने हमारा एक क्रिएटिव पैटर्न मेकिंग का मॉड्यूल था वो लिया था। तो ऐसे ये सब लोग जहाँ वहाँ, और मैं भी जब निफ्ट में था तो मैं शिलोंग से कांगड़ा एफडी फैशन इलस्ट्रेशन का क्लास लेने या फिर पैटर्न मेकिंग की क्लास लेने, तो यहाँ हम लोग ट्रैवल करते रहते थे, भुवनेश्वर जाते थे। तो ऐसे जहाँ जो रिक्वायरमेंट होती है सब लोग ट्रैवल करते हैं और सब एक जैसा करिकुलम से। एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ये होता है मेट्रो सिटीज में आप हो तो वहाँ आपको ब्रांड्स हैं जो उनके हेड ऑफिस हैं, तो थोड़ा इंटर्नशिप या सीनियर से इंटरेक्शन, या फिर किसी मॉल में आप जाते हो वहाँ ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। All right, I think that's all from my side, and all the best everybody. Good luck for your result. Krishna sir, आपको कुछ कहना है? Krishna sir, are you here? Yes sir, I'm here. Yeah. So Well, so we have the viewers who will watch later also can continue watching this and they're getting all information. Make sure you watch the complete video. I'm getting a question related to, what next to be done or when you will start situation test in GDPI, जो कि मैंने already बता दिया। आपके जितने भी questions हैं पूरे दिन में जो भी चीजें हुई हैं, because I was proactive. Last evening for those students who haven't given the mock, and today since 6 a.m. I think around 6 a.m. onwards for those students who are facing a problem or कुछ हो रहा था और जो call messages आ रहे थे, so I request all of you to send me your answer key to give us the better idea, and all the new viewer also are respected to make sure join the hand and be a part of it and get all help. Well, so coming back to the point about your this year exams, obviously cut-ups are overall, if you ask me, because I will explain detail BFT, MFM, MDES. आप जाके देखो वीडियो में, further go back if you just started watching. आपके लिए वो रिक्वेस्ट है मेरा, और अब जो भी कॉल मैसेज आएंगे मैं वही बोलूंगा, जो I'm not repeat the things. आप जाके देखो पूरे दिन में जो भी पॉसिबल चीजें हुई हैं, जिन बच्चों के साथ में जो जो हुआ है, ओवरऑल एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस। एक एक बच्चे का प्रॉब्लम लेके हमने डिस्कस किया, उसका क्या सोल्यूशन है, डू मेल और आपने मैसेजेस और ऐसे ही। एंड आई एम हैप्पी, ग्लैड knowing many of you have a great exam and the student have faced the problem also due to many reason, internet, server down and whatever. So that has been also discussed. But ending on this note is tomorrow there is a session. We will invite you in evening session. Starting of the session, for that, by being a part of that session, you need to subscribe the channel right now. Press the bell icon button so that आपको वो सारे info मिलते रहेंगे. And knowing about your mass cut up and all, जब आप भेजोगे मुझे, until tomorrow we have learned to access thousands of students there, cat and this one, and we'll have a conversation with many students, obviously for MFT, BFT also.
तो कल एक और एनालिसिस हम आपको बताएंगे अबाउट मार्किंग, अबाउट टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड दिस ईयर इन एग्जाम फॉर कोर्स वाइज, और क्या रहा है उनका कटअप, क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज है, किन बच्चों का कटअप होगा, और व्हाट सर सेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड अलोंग विद दैट व्हाट टू कीप एज ए प्लान बी, क्या रखना चाहिए हमें, कैसे करना चाहिए, वो भी प्लान करेंगे हम. So all that's I have to share with you all, and on this note I will take couple of questions and we will end this session after that. So let me move to the question which has been here in chat box, and you guys have asked it relatively. So look at here, some recent question is like 2+ सर मैंने कैट में क्वेश्चन में गलत डाल दिया है, टाइटल सही लिखा है, वो इवैल्यूएशन हो जाएगा, प्लीज रिप्लाई सर, पेपर इज नॉट सबमिटेड बाय द गैट. See, this has been GAT paper not submitted or it has submitted automatically. Detail में explain किया हुआ है, go and check. CAT paper, whatever number you have marked, question 1, 2, 3, basis on that they will share you. I mean, they will check your paper, they will mark you, they will give you number accordingly. I request you all, to any query you have, the number I'm writing again, this number here in a chat box, especially in YouTube chat box. You can send me on WhatsApp rather than calling me. Understand, like a limitation also. 9972046911, 9972046911. Here you send me the PDF of your answer. Here you send me all your query and the problem. We'll try to give you expected, what next step you can take as soon as possible. आपको कुछ प्रॉब्लम हो, आप जल्दी से जल्दी बताओगे तो हम उसका आंसर कर पाएंगे. आप बाद में बताओगे तो वी मे नॉट एबल टू हेल्प यू इन दैट वे. तो अगर आप चाहते हैं तो आपको इमीडिएट हेल्प मिले, इमीडिएट सपोर्ट मिले और उसका बेनिफिट हो, इमीडिएटली प्लीज रिस्पॉन्स, डू नॉट डिले इट, इमीडिएटली रिस्पॉन्स. टीम का जो है वो आपको पूरा ये मिलेगा और उससे आपको काफी फायदा होने वाला. ऑल दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, फॉर श्योर. So without further delay, make sure contact Ignite India team, get help, be in a touch, and stay safe, stay happy, don't bother at all. Make sure there are 17 of you who are live here right now haven't subscribed the channel, so subscribe right now, be a part of Ignite India family, and continue. We'll be keep coming with the video content, GDPI, situation test, studio test, other classes planning, which is going to be helpful for you. So you are most welcome. Be a part of those all sessions, those all sections, So that's it from here, my dear friends. So I am not going to take much time. If whomsoever will come across to your friend or anyone, family, anyone who want to know, please make sure you give them access to this session, forward this video to them. Once they will get this video, once they will reach out to this video, they will able to answer you, they will able to understand, what kind of queries you have, what sort of problem you are facing, and how it has to be solved. So make sure that if anything which is there in mind and you are facing okay na kya hona iska, kaise hoga, ye kya ho raha hai, ask, please contact. We are here to help you out, we are here with you. All right. So on this note, I am ending this session. I want to get smileys here, not crying faces on YouTube. Ishani, clear my doubt. Tell me why not I'll clear your doubt. Fill this form, ping me on WhatsApp also and ask me here. Ishani, no problem. Ishani Sinha is asking me, clear my doubt, sir. So tell me, Ishani, no problem. You just tell me right away. Write quickly, you write if you want to write. Yeah, I'm just waiting for your query. Okay, so I'm expecting if you are watching it, do write your query quickly. Yes, welcome our 2 new subscribers, 2 new friends in Ignite India family who have just subscribed the channel. I am waiting for your friend Isani question. She has mentioned it. So kaise aap log? Okay. Use Isani, I'm not getting your question. Expecting you to message me here. Whatever your query is, I'm writing. Okay. Number. Isani ने मैसेज भेज दिया है, सर मैंने कैट का एक क्वेश्चन में लिया था, मैंने गलत डाल दिया है बट टाइटल सही लिखा है, वो मैंने कहा आपको मार्किंग सबके लिए होगी मगर आपने जो क्वेश्चन नंबर लिखा है उसके बेसिस पे होगी.
और आप जो बता रहे हो to get the more better answer in a better way, you send me your this questions, I mean your query with the answer key in the chat box, so that you will get to know about it in better way, in detail. All right. So on this note, answering your question, I want your reply now. You got the answer. We will be ending this session. Please tell, sir. Yes, sir. Good, good. I mean, I'm just asking, my dear friend. I mean, you know, here in YouTube, there are some general ka cutup. Please go and watch Pink Fantasy video ka previous watch kariye. Again, if I'll repeat, that's a repeat content. We That will make video. a video for the cut up on your request. We will make a video. We will post, and also in Instagram we will be posting as a post. Also we will be sharing, so you will know all the cut up. All right. And anything if you need after watching this video, you can write in the comment box. We will be reviewing your the comments, and also we will be posting. Based on that, we will be creating the content. So whatever we are posting it here on the Instagram is based on your request only. So you can always request for anything if you need related to campus review or any university review or anything you can ask. We will make a video, we will post. Feel free to connect. सारे ये कटअप वाले जो है ना, पिछले साल का भी है वीडियो, वो भी आप देख लो, नया भी हम लोग डाल देंगे. All right, so the sir said that. So previous year video will also helpful for you in case you are getting worried, you are getting tense. Make sure you follow that video. That will be helpful for you. So that's what from this session. I have answered most of your questions. I have answered recently your friends here, like, you know, and the key fantasy, I've suggested you to write UCEED ka cut up. I mean, that has been mentioned. You have to check. We are right now discussing on it. And do fill the form. Ask us, like, you know, there in one-on-one discussion, we'll take all the questions. So this form, this link will be there. You can later also contact us. Below link also you can fill and get back to us. Krishna sir, I'm taking leave. Okay. So you all can right. continue, Thank sir. you, sir. Thank you. Thank you. Yeah, thank you, sir. So the same way we are, all the expert has come. Overall session I'll summarize for our current viewer. All the expert, student review, team feedback, everything has been covered in this video, which is there, and that has been discussed. Rather than taking multiple calls, we decided to come live, be there. I'm still getting good evening messages, Palak video, my video, I mean, sorry, PDF for answer key. So same way, why I'm repeating this, same way you guys can send me your PDF for review marking. Along with the mark, with the voice note or note, I will share you, which you can go through that, why and what basis. You will get those marks in your CAT paper. And yes, Isani Shinha has sent me a message. You are also welcome, Isani. I'm getting a WhatsApp messages based on this lives and based on this session, which has been there on YouTube. और कई सारे लोग जो अभी भी जुड़ रहे हैं हम लोगों को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उन सबका. Sir, I get preparing for situation test. Yes, one of your friend has asked, when I get preparing for situation test, you are most welcome. We are creating a group there. You will be most welcome to attend the part of. NIFT is going to accept all this. They will come. They will. It will come the mail, however it is, and you will get all the updates. So that's it from this session, my dear friends. We are saying that finally bye to you for today, and you can join us tomorrow evening 6:30. We'll share you. We will come the live. You can contact us to come in a live class also in a batches for GDPI and situation test and studio test, and their team will help you. So thank you so much once again. Till the time, bye bye everyone. Take care. Good night. Sleep well today. Whatever question